Hello everyone. This year, LevelUp IAS has decided to put all our prelims economy videos of PMP program on YouTube to be available for everyone. The PDF notes for the same is also available in the Telegram channel given in the description. These videos takes care of all the basics requirement plus PYQ discussions. If the response for these videos are good, we also plan to come up with current affairs, economic survey of India and budget session in a very concise manner for preliminary examination in the coming days on YouTube only. I hope you enjoy this video and level up your chances of getting selected in this year's preliminary examination. Thank you very much. External sector. When we talk about external sector, what we deal with is here, let's say this is India and rest of the world. Pura world, make India, rest of the world. All the transactions which are taking place, we'll talk about those transactions. Imports, exports, money coming in, money going out. ये सारी चीजें हमें एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़नी है, समझनी है. Now, money may come for any reason. Like when you're exporting something, money may come in. When you're importing something, money may go out. Some money may come for portfolio investment. Stocks में invest हो रहा है, Indian stocks में. Some money may come from for FDI. कोई इंडिया में फैक्ट्री शुरू कर रहा है. Some Indian may be taking out money and investing in Dubai. No, that is FDI there. Or in their stock market. So institutional investments there. All these transactions are something that we have to understand, study here in the topic on external sector. Okay, so we will first start with. Okay. We will first start with we'll come back to this current account. हम जब current account बोलते हैं, what do we mean by current account? देखो, करंट अकाउंट में और करंट अकाउंट का एक करंट अकाउंट का काउंटर पार्ट होगा कैपिटल अकाउंट ना. तो करंट अकाउंट में एनी गुड्स और सर्विसेज दैट वी आर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, उसके लिए एनी मनी विच इज बीइंग गिवन और एनी मनी दैट इज कमिंग टू द कंट्री, टेल मी दिस, डज दिस मनी हैव टू बी रिटर्न्ड? दिस मनी डजंट हैव टू बी रिटर्न्ड, राइट? आपने कार एक्सपोर्ट करी, यू एक्सपोर्टेड द कार, यू गॉट द मनी बैक. You exported, you imported the car, you send the money. It is a one-way transaction. You may say, sir, two-way. कार तो आई ना, कार आई है, but payment के perspective से बोलो, this payment you did once and that's it. Those transactions, these kind of transactions are included in current account. So current account records a nation's net trade in goods and services, because trade in goods and services will lead to money coming in or money going out, but one way. It doesn't have to be returned. Or net earning on cross-border investment, earning profits. आप जो investment कर रहे हो, that is in capital account, but the profit that you get out of that investment, no one is going to take away that profit from you. It doesn't have to be necessarily returned. Or net transfer payment over a defined period. Transfer payment, we understand transfer payment. Remittances जो आ रहे होंगे, those kind of things. Gifts जो आ रहे होंगे, those are also one way. तो in current account transactions are like revenue receipts and revenue expenditure. Here we have single time or one-way transactions. It means that the transaction happens once and transaction ends there. There is no future liability or future asset getting created. So those transactions, जहाँ पे transaction हो रहा है, one-way transaction, it is not creating any liability, it is not creating any asset. What are these transactions? These are current account transaction. So now, when Tata Motors export a car and receives money for that, the transaction comes to an end with respect to
the car being exported. This is a current account transaction. बात समझ में आई? तो current account में all these transactions would be included. So let us look at individual things within current account. थोड़ी गर्मी लग रही है तो why are ACs not? नहीं, दरवाजा मत, AC ऑन करना था ना. ACs चल रहे हैं क्या? ACs भी नहीं चल रहे. और अरे हाँ यार, प्लीज ये सेंटर वाला एसी चला दो यार. तुम लोग साइड में बैठ जाओ. हाँ, बोर्ड साइड से भी दिखता है, नहीं दिखता? अच्छा, प्लीज एसी ऑन करवा दीजिए. जब गेट बंद रहता है तो एसी ऑन रखिए, या फिर गेट क्लोज रहेगा और गेट खुला रहेगा. ठीक है राजेश, ये जो भी क्लास देख रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हो? हम लोगों को मारना चाह रहे हो आप लोग? एसीज भी बंद है, गेट भी बंद है. चानू नहीं, ये वाला मत चलाओ बेचारा. वो देख, लास्ट वाला चला दे. सबको एसी के मजे लेने हैं, चलवा दे. कुछ एक दो चलाओ पहले, नहीं पीछे वाले सारे चला दो, देखते हैं. ठंड लगेगी तो बंद कर देंगे. पर चलिए अब वापस आ जाइए, वापस आ जाइए. देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल सेक्टर, उसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट समझेंगे. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में वी आर रेफरिंग टू transactions between India and outside world. What kind of transactions? Transactions which are not creating any liability or assets. Those transactions are included where? In the current account transaction. जैसे when we export something, we are receiving money, export of goods. Or when we import something, we are giving out money. These transactions are part of which transaction? Current account transaction. और जो ये होता है ना एक्सपोर्ट, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स टू अदर कंट्रीज. प्लीज नोट दैट व्हाइल कंसीडरिंग ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर नॉट कंसीडर्ड. अभी हम जब ट्रेड बैलेंस वाले कंपोनेंट के अंदर बात कर रहे हैं, इंपोर्ट, इट इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड पेमेंट्स फॉर इट. एंड ट्रेड बैलेंस क्या होगा? ट्रेड बैलेंस इज difference between exports receipt minus import payment. So export minus import is your trade balance. Please note, trade balance में we are only considering goods export, not services. तो when you, हमें अभी करंट अकाउंट पढ़ना है. करंट अकाउंट का एक कंपोनेंट है ट्रेड बैलेंस. व्हाट इज ट्रेड बैलेंस? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ट्रेड बैलेंस सरप्लस में है मतलब एक्सपोर्ट इज हायर. ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में है मतलब एक्सपोर्ट इज lower than import. Are we getting it? So first, trade balance. Trade balance का मतलब समझ में आया? Now, will trade balance be part of current account? Yes. तो current account के अंदर एक component आता है trade balance. What is trade balance? Export minus import, but only of goods, only of merchandise, not of services. Then comes another component under trade balance is invisibles. अब देखो invisibles में ना you will see money coming in, money going out, but you will not see physical goods coming in, going out. So services are included in invisibles. So the invisibles is that part of balance of trade that refers to services and other products that does not result in transfer of physical assets. So you will not see. जब आप trade balance की बात कर रहे थे, when we were talking about trade balance, we were able to see car coming in, car going out, physical assets, physical things were being moved. But when we talk about invisibles, invisibles में service sector is there. Service sector में do we see physical things going in, going out? No. We see money coming in for it, money going out for it, but not physical things coming in, going out. So travel, transportation, insurance, government not included elsewhere, miscellaneous services, इसमें royalties on copyright and license fee etc. इससे जो पैसे आपको मिल रहे हैं, जो पैसे आप बाहर दे रहे हो, for export of services you will be receiving money, for import of services you will be giving out money. तो यहाँ पे there is that balance also, जो आप सर्विस वाला बैलेंस बोल सकते हो. But then there is income. Income is what? Income is you may have invested in land there.
that was capital expenditure, that is not included in current account. But when land में आपने invest किया, land से rent मिल रहा है, you may have invested in stock market, some money may be coming in. ऐसे other people may have invested in stock market of India, other people may have invested in land in India, उनके लिए money will go out. That is, those things are included in investment income. Got it? So income may be from financial assets, labor or property, but these income are investment income. और जो income ऐसे आ रही है ना, यहाँ पे आ रही है, these incomes will also be impacting your national income. Do you remember GDP production happening within the country? National income production that has happened within the country plus net factor income from abroad, land, labor, capital of residents outside. तो उसके बदले में income will come. Land, labor, capital of non-residents in India. इसके लिए income will go out. Resultant जो बचेगा, that is your GNP, gross national product. So that income is also included in current account. Then transfers. Transfers में we are talking about non-factor transfers. Land, labor, capital इन सब के वजह से जो पैसे आए वो तो income का part हो गया. Then transfers. They represent one-sided transaction, that is transaction that don't have any quid pro quo. Now you will say, sir, बाकी भी तो one-sided थे. Yes, बाकी भी one-sided थे, but there was some quid pro quo. बाकी भी one time थे, but there was always a quid pro quo. Service में you were receiving money because you gave some service. Export में you were receiving money because you exported something. Imports में you paid money because you imported something. But in transfer payments, there is no quid pro quo. It will only be one-side transaction. Grants, gifts, migrant transfer by way of remittances. Now देखो, यहाँ पे भी there was some income. If you are a resident, you go out, work for some time and bring back the money, that will be income. But then there is remittance of like an NRI living in US and sending money, that may be coming here, or repatriation of savings. You had some savings there and you repatriated it, or you had some savings here, you moved them out. Transfer of financial and real resources linked to change in residential status of migrants. All these may be private or these may be official. This may be coming to government, this may be coming to individuals. यहाँ पे हम government individual की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पूरी country की बात कर रहे हैं. तो under invisibles what do we have? Service sector. Under invisibles we have income. Under individual we have transfers. Here no goods you will see moving. Now if I bring you here in this table, ये जैसे एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से टेबल फिगर था एक्सप्लेनिंग वेरियस कंपोनेंट्स. देखो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेड बैलेंस. ट्रेड बैलेंस अगर हम 2019-20 के Q1 में जाएंगे, merchandise export is of $82.7 billion, merchandise import is $129.5 billion. What is trade balance? Merchandise trade balance, export minus import. Export minus import करोगे, will you get 46.8? ट्रेड बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया? नाउ इफ आई ब्रिंग यू टू इनविजिबल्स, इफ आई ब्रिंग यू टू इनविजिबल्स, उसमें नेट सर्विस एक्सपोर्ट इज 20. यहां पे ये नेट की बात कर रहे हैं. ओवरऑल सर्विस एक्सपोर्ट जो हुआ नेट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, दैट इज 20.1, ट्रांसफर इज 18.0 and income is minus 6.3. That is, net income is going out of the country because a lot of FDI etc may be there in the country. उससे income is going out of the country. All these things together are what? Invisibles. But both merchandise trade balance and invisibles, they're part of current account. Why? Current account में all those transactions are there which is not creating any asset or liability. तो जब आप करंट अकाउंट की बात करोगे, करंट अकाउंट इज मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल्स, माइनस 46.8 प्लस 31.8 विच इज माइनस 15. हमारा ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में है. in at least in Q1 of FY20 it was in deficit. I've included this figure just for कि आप रियल लाइफ में भी चीजों को समझ पाओ. और लेट मी कम टू रिवीजन के लिए we'll use this table. देखो करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है? मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस एंड इनविजिबल्स. व्हाट इज मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट.
What are invisibles? Net service, net transfers, and net income. They're part of invisibles. And trade balance plus invisible is equal to current account. देखो current account is what? A1 plus A2. A1 is merchandise trade balance. A2 is invisibles. बात समझ में आई? तो current account में what do we have? Current account में we have those transactions where no capital is in, or asset or liability is not getting created. Transaction ends there only. It was a one-time transaction. It ends then. You exported a car, you got money for it. Those transactions are with outside world will be included in capital account. बात समझ में आई? Will be included in current account. Sorry, will be included in current account. So if I'll revise the whole thing again for you. Current account records a nation's net trade in goods and services, its net earning on cross-border investment, its net transfer payment over a defined period. So goods net earning in good is what? Trade balance. यहाँ पे services, profit, income and transfer. ये सब इंक्लूड कर दिया. कहां चला गया? इनविजिबल्स में. सर्विसेज, गुड्स और merchandise trade balance plus invisible is what? Current account. Current account includes that. Current account transactions are single time or one way transactions. We understand this? Now let's go to यहाँ पे current account balance. What is current account balance? Current account balance is trade balance plus net invisibles. If it is positive, then we are in current account surplus, means that country is net exporter of goods and services, and if it is in negative, we are current account में deficit में. That is, country is net importer of goods and services. Country is net importer of goods and services. ये बात समझ में आई? अब देखो इंडिया की सिचुएशन में व्हाट इज द जनरल सिनेरियो? आर वी करंट अकाउंट सरप्लस में या करंट अकाउंट डेफिसिट में? डेफिसिट में. वी कैन सी दैट इन दिस डेटा आल्सो. कल मैं आपको लेटेस्ट नंबर्स भी दे देता हूं इकोनॉमिक्स. तो आई इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आई ट्राई टू लुक फॉर अ फिगर लाइक दिस. वो नहीं था, एंड दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड द. मैंने कल एक्सटर्नल सेक्टर वाला चैप्टर पूरा ब्राउज थ्रू किया, एंड वहां पे आई वांटेड कि दिस फिगर शुड बी अवेलेबल सो दैट मैं आपको 2023-24 वाला डेटा दिखा पाऊं विद ऑल दीज terms being used here. Eventually, external sector में what do we have to understand? We have to understand each and everything which is mentioned here. It was not there. But anyways, current account हर क्वार्टर में डेफिसिट में है, other than one quarter. Then in 2020 it is in surplus, otherwise it is in deficit. तो जनरली हम करंट अकाउंट डेफिसिट में रहते हैं. जनरली हम करंट अकाउंट, वी आर जनरली इन करंट अकाउंट डेफिसिट. व्हाई वुड वी बी इन करंट अकाउंट डेफिसिट? अब देखो करंट अकाउंट में फिर से सोचो, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर देयर इन करंट अकाउंट? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इनविजिबल्स. नाउ इनविजिबल्स में वी मे बी इन सरप्लस बिकॉज सर्विस सेक्टर में वी डू वेल. सर्विस सेक्टर में वी डू वेल, राइट? बट आर import of goods is so much. Oil import, electronics import, gold import. Will it hamper our current account? तो हमारा करंट अकाउंट जनरली सरप्लस में नहीं रह पाता. करंट अकाउंट में व्हाट आर वी एट? वी आर एट डेफिसिट. ओके, एक बार आंख बंद करके सोचो करंट अकाउंट के दोनों कंपोनेंट और उन दोनों कंपोनेंट के बाकी कंपोनेंट्स. क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक ऑफ कि इफ यू आर आंख बंद कर नहीं रहे हो, कर लो. सच में सोचो कि व्हाट आर देयर इन करंट अकाउंट सो दैट पिक्चर क्लियर रहेगा. सब लोग कंफर्टेबल है? तो इफ आई आस्क यू, अभी कभी मैं पूछ लूं, बताओ इनविजिबल्स में क्या होता है? विल यू बी एबल टू टेल मी क्या होता है इनविजिबल्स में? सर्विस, इनकम, ट्रांसफर.
सर्विस प्रॉफिट ट्रांसफर ऐसे बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट इनकम या प्रॉफिट एंड ट्रांसफर्स. Transfers may we have remittances also. Transfers may we have grants also. Transfers may we have gifts also. Any of those transfers may there is no quid pro quo. Whereas income में है आपने क्योंकि वहां पे कैपिटल इन्वेस्ट किया तब आपको इनकम मिल रहा है. सर्विसेज में you provided services then you are getting money. You took services that's why you are giving money. तो current account, अब current account deficit means we are in current account deficit means when it comes to merchandise trade and invisibles हम net पैसा बाहर दे रहे हैं. Deficit would means that current account surplus would mean हम net पैसा अंदर ला रहे हैं. Right? तो अब think of that gold bond scheme. Gold bond scheme अभी हमने gold bond scheme पढ़ा था. Gold bond scheme will contribute to reducing deficit or increasing deficit. Which deficit? Current account deficit. Because otherwise, because our consumption is gold so high, we keep on importing gold. उससे क्या होता है? Our merchandise trade balance becomes more deficient. बात समझ में आ रही है? पक्का? Each and every component is understood. Now let's go to capital account. In fact, पहले ना इस टेबल के थ्रू समझ लेते हैं. Then we'll study them in detail. Current account हमने समझ लिया था. Current account में we said we have current account constitute of merchandise trade balance plus net invisibles. या invisibles नहीं, I should write net invisibles. है ना? Merchandise trade balance वहां तो balance लिख रहे हैं मतलब net कर लिया हमने. यहाँ पे net invisibles that is current account. Merchandise trade balance में we have export minus import and net invisibles में we have services, transfers and income और services, income and transfer. ये एकदम ना आपको रिवाइज करते टाइम भी when you are a beginner and you have to understand all these terms, I've created this table for that purpose only. You should come in the very first page, you should be able to understand broadly every component before you go into the details. Are we getting it? Capital account. Capital account, देखो current account में there was no asset or liability getting created. In capital account, the transfers that would occur, it will be creating assets or liabilities. जैसे foreign investment. कोई आके इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, that is known as foreign portfolio investment. है ना? FIIs बाहर के इंस्टीट्यूशंस आके रिलायंस के शेयर्स खरीद रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, that is known as foreign portfolio investment. Now in future can they sell the shares and go back? Can they do that? तो अभी पैसा आया है but in future it may go out. It's not a one time transaction. They have created an asset here, उससे they will keep getting profit. The profit will be part of current account. Income will be part of current account. But eventually they can dispose of this asset and take the money back. What is it? It will be part of capital account. When money is coming in, it is bringing in money. When it will be going out, it will be taking out money. Then इसी में we also have FDI. Foreign investment FDI में long term हो. जैसे LevelUp is not listed on BSC. Let's say some foreigner invests in LevelUp. That investment will be FDI. Foreign direct investment. अगर आप listed company में invest कर रहे हो, you are FPI. अगर आप unlisted company में invest कर रहे हो, you are FDI. समझ में आई बात? इसको और डिटेल, अभी हम इनके बहुत डिटेल्स में जाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू, ये देखो जो बच्ची पहली बार पढ़ रही है वो सब लिखने में लग गई है. बेटा सब है नोट्स में, मैं बता दूंगा क्या लिखना है, फिर भी रिवीजन. अच्छा, are we getting it? अब आएंगे FPI. Now you may be saying कि sir, even in listed company if you invest in more than 10% of the share it becomes FDI. अभी उसमें जा ही नहीं रहे ना, अभी हमारा पर्पस वो नहीं है. We'll go into the nitty-gritties. So if you're investing in an unlisted company, you're doing FDI. If you're investing in a listed company, you're doing FPI. But if the money is coming in India, तो हमें FDI it's ensuring that more foreign exchange is coming to India. If money is going out of India,
then it's leading to more foreign exchange going out of the country. तो जो net FDI FII होगा, that will be the investment B1. तो will it be part of capital account? Can we understand the reason for it? क्या asset create हो रहा है? Okay. ऐसे ही loans में we can have external loans, that is government of India taking loans. Government of India का less than 5% of the loan, has it come from outside? हमने अपना जो है ना, तो हम बाहर से पैसे ले रहे हैं, तो will we have to return this money? When it was grant, so it was in current account, but when it is loan, it is in capital account. Government of India may be giving some loan, है ना, वो भी has to be taken into consideration here. Can we understand why it will be in capital account? Commercial borrowing, when जब businesses borrow कर रहे हैं, Reliance Industries borrow कर रही है from outside, where it will come? It will come to commercial borrowing. Now, commercial borrowing may generally include only the medium term and long term loans. That is, 3 साल से, तो the loans which are of more than 3 years, those are included in commercial borrowing. And here it should be basically external commercial borrowing, because here what are we talking about? We are talking about transactions from outside the country. India or rest of the world, like Reliance Industries may be borrowing 100 crore rupees from me. Will that be included here? Here we are talking about transactions from outside the country. ऐसे ही short term credit to India. Short term credit मतलब external commercial borrowing में what did we have? Long term things. When it's short term, when the loan is for 6 months, when the loan is for 1 year, when the loan is for 2 years, that is in short term credit. Got it? तो ये भी किसका part होगा? Is it creating assets and liabilities? That will also be part of capital account. Then banking capital. अब banking capital क्या है? ऐसे समझते हैं. Suppose some NRI is there and he creates FD in some bank account in India. Some NRI is there, he creates FD in some bank account in India. Has he brought in the money? External sector तो है. अब कहाँ डाले? Current में डाले कि capital में डाले? ये सोचो. Will he take this money outside also? Is it possible? It's possible. है ना? He has created an asset and eventually he will be earning interest on it and will be able to take this money out. It will be in capital account. Can we understand banking capital कैसे it will be in capital account? ऐसे ही rupee debt service या other capital flows, rupee debt. बस गया. उठाओ, बात करो, इसको उठा लो. नहीं, यहीं बैठ के बात करो. तुम जाओगे सबको डिस्टर्ब करोगे. बाद में करोगे. मम्मी से बात करने में भी शर्मा रहे हो. मैं बताया, मेरा एक दोस्त था, उसने नाम ऐसे सेव करा था, मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3. किसी का भी कॉल आता था, मम्मी का ही है यार. तुमने अपने गर्लफ्रेंड्स के नंबर ऐसे सेव नहीं कर रखे? मम्मी जी. अच्छा, तो व्हेन इट्स मम्मी जी, इट्स मम्मी मम्मी 1, मम्मी 2, मम्मी 3, देन अपने बच्चों की मम्मियां. इसको लेट समझ में आया. वो भी मम्मी है ना? तो लेट समझ में आया ना थोड़ा. इतना नहीं सोच पाए थे. देखो, आई एम सपोज लाइक, मेरी एज 30+ हो गई है, मेरी मम्मी पापा का कॉल आ सकता है, तुम्हारा नहीं आना चाहिए क्लासरूम में. किसका आ सकता है? तुम्हारे बच्चों की मम्मी का, तुम्हारे लव इंटरेस्ट का. When you will cross 30, you will realize parents are more important. जब तक मैं 30 था, मेरे को लगता है यही सबसे इम्पोर्टेंट है. मम्मी पापा तो ठीक है, फिर जब थोड़ा बड़े हुए तो पता लगा मम्मी पापा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये सब तो आएंगे जाएंगे, बट यू एक्सपीरियंस दैट. क्या नहीं? ओ ऐसे क्या था? तुम लोगों का कभी कटा नहीं है? सबका कटता है ना? तो पता, मम्मी पापा कभी नहीं काटते. उन्होंने पैदा कर लिया, यू हैव बिकम अ लायबिलिटी ऑन देम. वो आप लायबिलिटी हो, फिर भी आपको संभाल के रखा हुआ है ना? तो इसीलिए, बट यू रियलाइज इट थोड़ा सा जब कट जाता है कई बार बाकी जगहों से, तो पता लगता है प्यार इज नॉट
अनकंडीशनल हर जगह से, सिर्फ पेरेंट्स से प्यार अनकंडीशनल होता है ना? तुम्हारा नहीं कटा कभी? अपार तुम्हारा कभी नहीं कटा? कटा तो होगा। नहीं नहीं यार, कई बार ना बिना हुए भी कटवा लेते हैं, है ना? कई बार बस उसे देख के लगता है मेरी ही है, फिर अपनी तरफ से सारे इमोशंस कनेक्ट कर लेते हैं, फिर वो किसी और के साथ चली जाती है, बोलते मेरा कट गया। ये अपना खुद से कटवाना होता है, उसने नहीं काटा है तुम्हारा, यहाँ पे अपना खुद से कटा है। जैसे तो अपार कभी नहीं कटा तुम्हारा खुद से, या फिर तो कटा ही होगा। ओके, लेट्स कम बैक। तो बैंकिंग कैपिटल समझ में आ गया? ऐसे रुपी डेट सर्विस, लाइक in some situation you have borrowed money and denominated in rupee, and you're paying it using rupee, and those things are included here, and kuch aur capital flow which may occur, all those things are included here, but all these form part of what? Your capital account. And capital account plus current account basically gives you your balance of payment. अब इसमें कुछ errors and omissions हो सकते हैं, that's why we add a C component of errors and omission, but overall balance of payment is what? Capital account plus current account. तो balance of payment में basically as we are saying, country and outside the country. What is the eventual balance of payment? How much money has gone out? How much money has come in? If balance of payment is positive, then more money has come within the country. If balance of payment is negative, then more money has gone outside the country. बात समझ में आई? तो देखो, positive balance of payment would lead to increase in a nation's net foreign asset, and negative balance of payment would lead to decrease in a nation's net foreign asset, और basically we say कि foreign exchange जो आपके पास है। ओके, ये पूरा समरी है। तो फिर से अगर if I have to close my eyes and think of current account, capital account. In current account, I have merchandise trade balance, I have invisible. In merchandise trade balance, export minus import. Invisibles में I have service, net income, and net transfer. और तो this merchandise trade balance plus invisible is my current account. है ना? If I go to capital account में I have investment, I have loans, I have banking capital, I have rupee debt service, and some other things. And current account plus capital account is giving me what? Balance of payment. अब एक चीज समझते हैं, देखो current account में this money is coming in and this money is going out. Let's say capital account मेरे को different color से लिख लेने दो. Capital account में this money is coming in and this money is going out. Now, when international transaction takes place, does it take place in foreign in dollars? Let's say when you are buying something, when you are importing something, do you have to pay in dollars? Yes. When you are exporting something, do you receive dollars? As when FDI happens, dollars come within the country. When you want to do FDI somewhere, you'll have to take dollars to that country. So you'll convert rupee into dollars and then go. Okay, और ऐसे समझो, suppose you are going for tourism. When tourists come to India, they bring dollars and they get converted into rupees. Dollars आया इंडिया में? When you go out of India, तो आप जैसे suppose you're going to Thailand. When you go to Thailand, आप पहले इंडियन रुपी को यहाँ पे डॉलर्स में कन्वर्ट कराओगे, and you will take some dollars. There in that country, dollar can be converted into their currency very easily. रुपी उसकी उनकी करेंसी में कन्वर्ट होगा पक्का नहीं है. रुपी स्टिल नॉट अ इंटरनेशनल, इट रुपी स्टिल नॉट इंटरनेशनलाइज्ड, है ना? तो रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है यहाँ पे when you exported something and money came to India, dollars came to India, dollars went out of India. But if you have surplus here, more dollar will come to India. Generally where we are in deficit, so more dollars are going out of India, है ना? ऐसा होता. ऐसे ही यहाँ पे capital FDI is coming to India. Are dollars coming to India? Or other forex reserve, other foreign currencies are coming to India. When you are making FDI outside,
You are depositing money in, let's say, कहाँ ले जाओ, स्विस बैंक्स में, बैंकिंग कैपिटल होता है ना, बैंकिंग कैपिटल, और you are giving loans to other government. Dollar is going out, when it's coming in, dollar is coming in, right? So net balance of payment also tells you how much more dollar you have. If you have net balance of payment surplus, your forex reserves will increase. If your net balance of payment is in deficit, your forex reserve will decrease. बात समझ में आ रही है? तो even with money is coming in the form of FIIs, we are like, FII से पैसा आ रहा है, they're bringing in dollars. Now in future they may take it away, fine, but अभी तो इस साल तो डॉलर्स कंट्री में आए ना. What would happen? Forex reserves in country will increase. We are taking loans from outside, fine, but loan की वजह से dollars are coming in, supply of dollar in our economy is increasing, rupee will appreciate. डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो डॉलर और रुपी में, डॉलर इज मोर, विल इट वैल्यू रिड्यूस रिलेटिव? बट if let's say a lot of money is going outside the country, a lot of, हमारा पूरा ओवरऑल क्या है, डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, तो डॉलर विल बी गोइंग आउटसाइड द कंट्री, तो यहां पे डॉलर्स अवेलेबल विल रिड्यूस. व्हेन इट रिड्यूसेस, द डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस, डॉलर अप्रिशिएट्स, रुपी अप्रिशिएट्स. ये चीजें हम और डिटेल में पढ़ेंगे और सब में इन विल गो इन डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ दीज थिंग्स. बट फर्स्ट आई वांट यू पीपल टू डेवलप अ फील ऑफ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ओवरऑल थिंग, before we go into the nitty-gritties. Let's look at this table. देखो, करंट अकाउंट, कैपिटल. करंट अकाउंट वाला कंपोनेंट तो हमने समझ लिया था. कैपिटल अकाउंट में देखो, in real terms, अगर हम if we go to Q1 of FY20, Q1 of FY20 is April, May, June 2019. Q1 of FY20 का मतलब क्या है? अप्रैल, मई, जून 2019 है ना. इसे कितना पुराना टाइम हो गया ऐसा लग रहा है. जस्ट बिफोर द कोविड, 2020 में कोविड हुआ, 2019 में. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? $14 बिलियन का. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट $4.8 बिलियन का. नेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज 18.8. लोन्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस 1.5. इट इज टेलिंग अस व्हाट? मनी कमिंग इन द कंट्री, मतलब हमने पैसे, नेट पैसे हमने लोन लिए हैं, $1.5 बिलियन. कमर्शियल बोरोइंग, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म 6.1. शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू इंडिया 2.0. मतलब नेट मनी इज coming with, though we are taking loan, we have to return it in future, but net money is coming in, that's why ये positive है. Because in balance of, when we are measuring balance of payment, we are like, पैसा जितना आए अंदर, चाहे वो लोन से आए, चाहे वो एक्सपोर्ट करके आए, money coming in is what is important. So in terms of in terms of foreign investment, you will see generally we are in positive. Foreign investment, are we in positive in general? Except this period. देखो, ये period कौन सा होगा? Q1, Q2, Q3, Q4 most probably ना. Q4 is January, February, March 2020. अब अपने यहाँ लॉकडाउन 2020 मार्च में लगा है, but you will see lockdown had started in January, February in different parts of the world. Stock prices had also started going down. जिन लोगों ने भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा था, they were withdrawing money. When money was coming in India, it was positive. You will see FPI minus $13 billion. Q4 में it's minus $13 billion. Can you see that? Can you understand the reason for it? ये टेबल समझ में आ रहा है? Come to this loans. हाँ, ये we saw that banking capital, net banking capital यहाँ positive है, यहाँ पे people have withdrawn money, right? Similarly, rupee debt service is very negligible. Other capital thing is there. Errors and omissions. Overall balance, current account
plus capital account plus errors and omissions. Overall balance is what? Positive. What does this mean? This means that more dollars are coming to India. Do we see our forex reserve generally increasing? Do we see that happening? हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज हम फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में भी पढ़ेंगे. इट हैज kept on increasing over the years because our net balance of payment is positive. While एक टॉपिक हम ये भी पढ़ेंगे, while in rest of the world चाइना का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा है because it has a lot of export, because its current account deficit, current account is in surplus. But in case of India, is current account generally in deficit? Current account generally in deficit. So our forex reserves are increasing not because we are exporting more, not because our current account, not because of our current account surplus. Our forex reserves are increasing because of our capital account being in surplus. Our forex reserves are increasing because of our capital account. ये देखिए, capital account you will always see in surplus. 28.6 billion, 13.6, 23.6, 17.4 in the whole year. This much net capital came to country. Some of the capital went out, but net capital इतना आया. Then in you will see foreign से capital कब नहीं आ रहा है? कोविड का जो पहला क्वार्टर है, April, May, June 2020, very less. But then it increased. And capital account में we are in surplus, and that is why overall balance of payment में we are in surplus, and that is why our forex reserves are also increasing. क्या ये समझ में आया? देखो, once you understand this part, no, a lot of things are sorted, a lot of things are taken care of. हम अंदर इनको ही और डिटेल में समझा रहे हैं, but this table, this picture should give you a lot of clarity. Now some of you are part of foundation batch जिन्होंने ये चीजें पहले नहीं पढ़ी हैं, उनके लिए अभी तक things may have been a bit difficult. Don't worry, अभी हम individually एक एक चीज में जाएंगे, समझेंगे, you'll be able to understand it. Okay, first thing हमने जो already we have studied, current account में we have merchandise trade balance and invisibles. Merchandise trade balance में goods export minus merchandise export minus merchandise import, ये everyone has been able to understand. फिर इनविजिबल्स में वी हैड व्हाट? सर्विस, नेट इनकम एंड नेट ट्रांसफर पेमेंट्स. गॉट इट? ये दोनों करंट अकाउंट का पार्ट क्यों है? बिकॉज दीज आर वन टाइम ट्रांजेक्शंस. दीज आर नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट एंड लायबिलिटी की फ्यूचर में इट विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स. कंफर्टेबल? अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे. Let's come to capital account. Sir, FDI is in surplus in 2019-20 Q4. Why? 2019-20 Q4 में FDI surplus में. देखो, FDI जो होता है ना, FDI थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो अब जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज टेम्पररी, दैट इज हॉट मनी. बट FDI जैसे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट विच अकर्ड ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन was Facebook investing a few $billion in Reliance. जियो में इन्वेस्ट किया था, रिलायंस में कहीं इन्वेस्ट किया था, है ना. अब लॉकडाउन चल रहा है, सब बंद पड़ा हुआ है, but Facebook still sees potential of Jio. It invested a lot of money into it. So all these things lead to, like, even when investment scenario is not good, FDI ho jata. Okay, let's come to capital account. Capital account transactions are two-way transactions. It means paid money can be recovered through periodical income and or by disposal of asset created. Similarly, the loan has to be repaid periodically and has to be settled finally by paying full amount. So these are two-way transactions. Anything? अब आपसे पूछा जाएगा ये चीज कैपिटल अकाउंट में आएगी या करंट अकाउंट में. अभी you will see when we'll do PYQs, these kind of questions are also asked. अगर पता नहीं है तो सोचना, is it a one-time transaction or is it reducing liability, increasing asset? उसके बेसिस पे टेक अ कॉल. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक
एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है, नहीं, एक कंपनी है जिसके पास क्या है, पेटेंट है। एक कंपनी है जिसके पास पेटेंट है फॉर मेकिंग अ मेडिसिन, राइट? नाउ यू take permission from that company for making that medicine, it will charge you license fee, right? Where will it go? Capital account or current account? Current account है ना, current account में जाएगा, because it's a one time transaction and it's not creating any asset or liability. But suppose you want to buy the patent, you want to get ownership over the patent, ownership over the capital copyright, and for that you pay money. Is it current account or capital account transaction? Capital account, because you have created an asset now. उस कंपनी के पास पेटेंट, दैट कंपनी हैड द पेटेंट, बट नाउ यू हैव बॉट दैट पेटेंट. That company had patent, but now you have bought the patent. Now you have that asset. This transaction was capital account, right? So think of any transaction. अपने मन में सोचो कोई भी transaction, and if you have any doubt, ask whether it will be in current account or capital account. Any transaction that's happening between India and rest of the world. अब टर्की में earthquake आया, Government of India says take 50 crore rupees from us, or converted in dollars, वो डॉलर्स में जाएगा from us in the form of grant. Will it be in current account or capital account? current में कहाँ, मर्चेंडाइज में या इनविजिबल्स में? इनविजिबल्स में भी कहाँ पे? ट्रांसफर पेमेंट. समझ में आ रही है बात? बट यही इंडिया वुड हैव सेड टेक दिस जीरो इंटरेस्ट लोन, गिव इट टू मी 10 years later. कैपिटल अकाउंट में कहां पे? लोन्स. कैपिटल अकाउंट में लोन्स में. आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? पक्का क्लैरिटी है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. When questions come, will we be easily able to answer it? Okay, let's say you travel to US. अब always think of the logic or rationale behind it rather than cramming it. हमेशा देखो, इकोनॉमी में you should not need to cram anything. You will need to cram factual things, but conceptual things you should not need to cram. Always think the rationale behind doing that thing. Suppose a foreigner comes to India and buys some clothes and everything. वो करते हैं. Will it go to merchandise trade balance or invisibles? अगर वो फॉरेन टूरिस्ट के फॉर्म में आया ना, उसने टूरिज्म के एक्सपेंस में वो स्पेंड किया है, दैट इज इनविजिबल्स. टूरिज्म इज अ सर्विस. अगर वो फॉरेनर बिजनेस के लिए आया था और ही इज इंपोर्टिंग दिस, दैट इज मर्चेंडाइज ट्रेड वाले पार्ट में. आर यू अंडरस्टैंडिंग द रीजन? आई केम एज टूरिस्ट एंड एज टूरिस्ट आई हैव done certain things, I have made some spendings. तो tourism वाले, tourism getting us that business है, that is service sector. But if this tourist is also coming for business and is ordering कि ये 10 shirts मुझे खरीदनी है and is exporting it, importing it from India, then that would have been merchandise trade. But वो आ रहा है खुद के पहनने के लिए, खरीद लिया है ना? तो the tourist came and गोवा में जाके 100 रुपए वाली जो शर्ट मिलती है ना, वो एक दिन पहन लो और मस्त कलरफुल शर्ट्स, वो खरीदी. दैट्स स्टिल पार्ट ऑफ व्हाट? इनविजिबल्स. इनविजिबल्स में भी कहां पे? सर्विस सेक्टर. टूरिज्म इज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर. सब समझ में आ रहा है ये? ओके. तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में paid money can be recovered. So capital account transactions are two-way transactions. Here paid money can be recovered. Either paid money say you are creating asset. When you are creating asset, can it be recovered? Yes, you can sell the asset and recover it. Okay, so it includes loan, banking capital, investments. अब इसमें rupee debt service, we had seen that that's negligible. Rupee debt service is also there, and errors and omissions are there. But rupee debt service negligible है, तो generally what is there in capital account? Loans, banking capital and investment. If you have looked at the table,
These are the major components. Okay. Let's talk about loans. Sir, but it is right to say that positive BOP due to surplus in capital account is less sustainable than the surplus in the current account. Beta, sustainability is looked at from different perspective. Sustainability, government loan ले रहा है, वो sustainable है या नहीं? Positive balance of payment is good. India's balance of payment has been positive. We have been receiving a lot of money. अब वो FDI में भी आ रहा है, FII में भी आ रहा है. It's fine. When individually we'll study FII, we'll see that a lot of FII may not be suitable. A lot of FDI, like we should have our own investment occurring. वो issues रहेंगे. But if you have negative balance of payment, that's a crisis that has to be avoided. Okay, let's come back. Loan. So we have come to capital account. In capital account, first thing that we are studying is loan. So external assistance, official bilateral or multilateral loans, external commercial borrowing and short-term debt. तीन चीज. Commercial borrowing more than 3 years वाली, short-term debt less than 3 years वाली. ये businesses के लिए. And when government is taking it, it is what? External assistance. External assistance means transaction of official, bilateral and multilateral loans. India taking loan from other country, India taking loan from other multilateral agencies. India giving loan to other country, India giving loan to other multilateral agencies. ये surplus में कब रहेगा? जब India ज्यादा loan दे रही है, India ज्यादा loan ले रही है. When India is taking money, because यहाँ पे surplus would occur when we are receiving more money within the country. यहाँ पे surplus works in a different manner. Are we getting it? ऐसे ideally you will feel like we have more money, we are giving money to other country. That should be considered surplus. No. Capital account में surplus is like किसी भी account में. Here when we'll talk about surplus, more money should be coming in the country. Got it? So loans में external assistance is government loans, either from bilateral mechanism or from multilateral mechanism. क्या समझ में आ रहा है ये? Second, external commercial borrowing. Commercial borrowing. Who is borrowing this? Businesses. It includes loan transaction. It includes loan transaction by commercial enterprises and or business enterprises. External assistance was what? Government loans. External commercial borrowings are commercial borrowings, commercial business loans. So it may be in the form of bank loan, buyer's credit, supplier's credit. So what were you saying? It can be in the form of bank loan, buyer's credit, supplier's credit, securitized instrument availed from non-resident lenders with a minimum average maturity of 3 years. 3 साल से कम वाले तो कहाँ गए? Short term. Now, external commercial borrowing can only be raised for specific purpose. For let's say import of goods, for implementation of new projects, etc. The restrictions are called end-use restrictions. You cannot take external commercial borrowing for anything. There are restrictions imposed. Government regulates external commercial borrowing and there are restrictions imposed. अब देखो external commercial borrowing में bank loan we can understand. Reliance ने किसी बाहर की कंपनी से लोन लिया. But what is buyer's credit? What is supplier's credit? Let us understand them. Why do we need to understand them? Because we have seen UPSC छोटे छोटे टर्म्स में क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो जो भी चीज अपने नोट्स में वो टर्म्स है, we should be like having some awareness about it. अब now both buyer's credit and supplier's credit are doing what? Are making Indian importers import things. जैसे I have to import some things and I don't have money, तो मुझे लोन मिल जाए, मुझे लोन मिले, using that loan I'll pay the money. वो तो चला गया करंट अकाउंट में, but I have taken loan, I have to repay that loan in future. That is capital account. अब what is the difference between buyer's credit and supplier's credit? What is the difference between buyer's credit and supplier's credit? Let us understand that.
Supplier's credit relates to credit for imports into India extended by overseas supplier. That is, I want to, let's say I want to buy Rafale, नहीं Rafale तो government खरीदेगी. I want to buy, let's say, बाइक लोन पे लेके बाइक भाई कुछ भी कभी भी लोन पे डोंट टेक मनी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. Loan should always be taken for capital expenditure. When you're taking loan for consumption expenditure, you are making your life unsustainable. तो घर में कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, लोन नहीं लेना है उसके लिए. कार खरीदनी है, ओला का ड्राइवर बनना है, ले लो. हंसने की बात नहीं है, because that's a capital expenditure. We have studied capital expenditure and consumption expenditure. Consumption expenditure should never be done using loans. Never. So suppose I'm buying some more TV screens and I don't have money to pay. एक US की कंपनी बोलती है buy our TV screens, will provide you loans also. That is supplier ने loan दे दिया. That is supplier's credit. That is supplier's credit. Did you understand this? Now there is another scenario. Supplier says मेरे पास तो पैसे नहीं है, but there is export import bank here. You take loan from it. Export import, तो उनका export import bank क्या करेगा? उनका export import bank will be promoting their exports. Their export can be promoted. If I'm an importer, I don't have money, I can get loan. So when banks come into play, that becomes buyer's credit. When supplier himself was providing loan, it was supplier's credit. When bank came into play, it becomes buyer's credit. Buyer's credit refers to loans for repayment of imports into India arranged by importer from a bank or a financial institution outside India. Got it? Arranged by the importer from a bank or financial institution outside India. तो मैं buyer हूं, मैं importer हूं. I have arranged that loan from where? From some financial institution or from some bank outside India. That is buyer's credit. तो supplier पैसा दे देगा तो supplier's credit, else it is buyer's credit. So is this part of external commercial borrowing? Yes, this can also be part of external commercial borrowing. Please note both these credits are for the purpose of import and loan availed by importer, and that is why they are also known as trade credits. This is for the purpose of import and for loans to be paid by importers. ऐसे securitized instrument क्या है? They refers to debt securities like bonds, debentures and preference shares which are not fully or compulsorily convertible. अब आप ये बॉन्ड्स ले रहे हो, बेसिकली बॉन्ड्स क्या है, लोन ही लेना है, बाहर से लोन ले रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, ये वी ऑलरेडी नो. बॉन्ड्स आर डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड, बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड, दीस थिंग्स वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड. प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. अब प्रेफरेंस शेयर यू विल से सर प्रेफरेंस शेयर को आप यहां कहां डाल रहे हो? प्रेफरेंस शेयर शुड गो वेयर? इन एफडीआई और एफआईआई. ओके, यहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर एक्सप्लेन कर रहे हैं. आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नोन फॉर गिविंग ओनर्स प्रेफरेंशियल राइट इन द इवेंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट और लिक्विडेशन बाय अंडरलाइंग कंपनी. हियर वी आर नॉट. तो इफ यू कम हियर, ECBs it includes commercial loans in the form of bank loan, buyer's credit, supplier's credits, securitized instruments available from non-resident lenders. Securitized instruments, securitized में you can have debt instruments, you can have equity instruments, right? Now securitized credit में what are the things we are including? Bonds, debentures, preference shares. Now preference shares में ना आपको compulsorily dividend देना पड़ रहा है. Preference share पे compulsorily dividend देना पड़ रहा है, so they are like loans only. When liquidation has to occur, preference share has to be paid back in a timely manner. तो preference share वालों को voting rights भी नहीं मिल रहे, तो they are not getting ownership over the company. तो जब तक their preference shares are not converted into regular shares, they are what? They are kind of loan only, and that is why they are included in external commercial borrowing. The external commercial borrowing में we have
import credits, trade credit, we have securitized instrument. Do you understand securitized instrument के एक-एक component को? Okay. ECBs also cover foreign currency convertible bond and foreign currency exchangeable bonds. Bonds तो ECB cover करेगा, foreign bonds ECB cover करेगा. External commercial borrowing, Reliance is issuing some bond outside the country. Will that bond be covered under ECB? वो समझ. अब what is foreign currency convertible bond and foreign currency exchangeable bond? Let's understand. मैं पहले आपको briefly current account, capital account का overview क्यों देना चाह रहा था? Because when we go into technicalities, कई बार ना जो बड़ा framework है वो miss हो जाता है. So I want never forget that bigger framework, and then we can go into the nitty-gritties of each of the components. So let's understand foreign currency convertible bonds and foreign currency exchangeable bonds. पहले हम करते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बॉन्ड्स तो वी अंडरस्टैंड, बॉन्ड्स आर इशूड टू बोरो मनी. तो रिलायंस हैज इशूड बॉन्ड्स और लेट्स से टेकिंग 100 crore rupees. पर ये तो डोमेस्टिक मार्केट में भी कर सकते थे. when these bonds are done in foreign market, तो आप पैसा बाहर से ले रहे हो, then it will come in external sector. It is loan. So where will it come? Current account or capital account? Capital account. It is loan by commercial entity. Where will it come? External commercial borrowing. It will come under external commercial borrowing. ठीक है. तो ये bond external commercial borrowing में आएगा जब when Reliance is taking loans from outside the country. Is that understood to everyone? First part is understood. Now second, let's come to foreign currency. If this bond is denominated in foreign currency, so I'll not take 100 crore rupees. What will I take? Dollars. है ना? Let's say I have to borrow 10 million dollars. 10 million dollars around 87 crore rupees. ना अभी 87 rupees चल रहा है, तो हाँ around 87 crore rupees. I have to borrow 10 million. तो foreign currency में पैसा ले रहा हूँ. It is foreign currency denominated bond. Is it foreign currency denominated bond? तो foreign currency bond ये समझ में आ गया. अब convertible is this bond may be converted into stakes also, shares also. If that option is there, if the lender has that option, तो lender थोड़ा कम interest rate पे पैसा दे देगा, because lender has an option, whatever will be more suitable. If borrower has that option, borrower will be ready to pay higher interest also. Now, convertibility can be like in the bonds terms and condition, the scenarios may be provided for. But anyways, did we understand foreign currency convertible bond? Did we understand foreign currency convertible bond? Okay. Let's say Reliance एक नई कंपनी शुरू करता है. ये अपना आकाश अंबानी है जिसको जानवरों से बड़ा प्यार है, अनंत अंबानी. और his name is अनंत अंबानी, not आकाश अंबानी. Okay. अनंत अंबानी की लीडरशिप में एक बिजनेस शुरू करते हैं फॉर एनिमल फूड्स, है ना. लेट्स से दे स्टार्ट दिस बिजनेस फॉर एनिमल फूड, है ना. वो उसको कौन सा होता है, नहीं कौन पेडिग्री क्या, डॉग्स फूड पेडिग्री. लेट्स से पेडिग्री को कंपीट करना है. पेडिग्री पक्का यही ब्रांड है तो अच्छा लग रहा है. तो इट स्टार्ट्स रिलायंस DF, RDF, Reliance Dog Food, RDF brand, and they go for borrowing foreign currency convertible. They go for foreign currency convertible bonds. The investors में से सर हमें नहीं पता ये RDF के शेयर्स की क्या वैल्यू होगी, क्या होगा. We don't want. Like people are not that much interested.
in this convertible bond because this company has still not proved its worth, its future. So in this scenario, what Reliance may offer will give you foreign currency exchangeable. That is, you will be able to exchange this bond will be exchanged with the Reliance shares. Reliance shares to have proven track record. Reliance dog food may not have proven track record. So they may not be interested in converting the bonds in Reliance dog food stocks. But this company has proven track record. So this is foreign currency exchangeable bond. आप borrow इसने ही किया है. But the shares, when bond is converted into shares, it will be converted into which shares? Reliance Industries, which has proven track record. बात समझ में आ रही है? They are exchangeable into equity share of another company called the offered company. The word exchangeable refers to the facility to convert bonds of one company into equity share of another company. वो किस कंपनी का बॉन्ड था? रिलायंस डॉग फूड का बॉन्ड था, but it was getting converted into shares of Reliance Industries. Its other features are similar to FCCB. The key difference lies in the type of equity ownership that results from the exercise. Direct ownership of the issuing company shares in the case of FCCB and ownership of shares in different company for FCEB. Did we understand foreign currency convertible bond and foreign currency exchangeable bond? इतना ना कुछ complicated होता नहीं है. Name itself can give us everything. आपको बहुत याद भी नहीं रखना पड़ेगा. बॉन्ड लोन ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, कन्वर्टेबल है. बॉन्ड लोन ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है, एक्सचेंजेबल है विद द शेयर्स ऑफ सम अदर कंपनी. गॉट इट? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड भी सबको समझ में आया. देन कम्स शॉर्ट टर्म debt. These are trade credits for a maturity less than 3 years. बिजनेस के लिए जो आप लोन ले रहे हो for maturity of less than 3 years, they are not going in external commercial borrowing. Where are they going? शॉर्ट टर्म डेट. तो ये तो सारे क्या हो गए? लोन्स हो गए. ये सारे लोन्स हो गए. In capital market, these are loans. These have to be repaid back. These have to be paid. These have to be paid back. These are loans. What are we studying? अब वापस से, because we went into depth of certain points, तो हमारा ओवरऑल पिक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए. ओवरऑल पिक्चर क्या है? हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में वी हैव करंट अकाउंट, वी हैव कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में वी हैड ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस. मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस में वी हैव एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. देन वी हैव इनविजिबल्स. In current account, we also have invisibles. Invisibles में we have net service, net income and net transfer. Capital में आ रहे हैं तो capital में we have investment, we have loans, we have banking capital. Investment को हम सबसे आखिरी में पढ़ रहे हैं, but पहले loan, banking capital इन सबको पढ़ रहे हैं. Loans we have understood. Loans में we have external assistance जो government को मिल रहा है, and then external commercial borrowing and short term debt. External commercial borrowing में we have loan from bank, buyer's credit, supplier's credit, and then loans through securitized instruments. There we have what? We have external bonds, we have preference shares, those kind of things, and we also have foreign currency convertible bond, foreign currency exchangeable bonds. अब देखो, please understand, foreign currency convertible bond, foreign currency exchangeable bond में someone may be taking loan from India also, है ना? तो वो पैसा बाहर जा रहा है, that will have to subtract. Money which is coming in, that will have to add. Always keep this in mind. Yes, beta. सोचो सोचो. सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस है. बेसिकली हमें चाहिए जितने पैसे आ जाए वो अच्छा है. सरप्लस. जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट इज इंक्रीजिंग माय डेफिसिट वेयर? करंट अकाउंट. इंटरेस्ट पेमेंट कहां पे होगा? करंट अकाउंट में, इनकम वाले सेगमेंट में. इंटरेस्ट पेमेंट्स आर वन टाइम ट्रांजैक्शन, वेयरएस इस इंटरेस्ट पेमेंट वाला पैसा आप वापस नहीं लोगे. वेयरएस money that you have borrowed, it has to be returned back. It's a 2 times transaction. क्या
Are we comfortable here? Okay. Let's come to banking capital. Banking capital is a very less understood topic. Banking capital सब ना FCCB sorry ये NRO FCNR ये सारे terms लिख के लोग छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है और फिर कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है. हमें वो नहीं करना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो प्रॉपरली. वाई शुड जो चीज एनसीईआरटी में दी हुई है हमें समझ में ना आए, ऐसा क्यों रखें? वी शुड बी दिस वेल प्रिपेयर्ड कि यार अगर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. वी शुड बी दिस वेल प्रिपेयर्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आधी एनसीईआरटी छोड़ दी है और फिर इन एग्जामिनेशन हॉल इवन इफ द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट आई एम गेटिंग अंडर कॉन्फिडेंट बिकॉज आई एम थिंकिंग कि ये मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़े हुए हैं. वो नहीं करना है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देखो बैंकिंग कैपिटल का मतलब तो वी अंडरस्टैंड. अब बैंकिंग कैपिटल में देयर कैन बी थ्री कंपोनेंट्स: फॉरेन एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन लायबिलिटीज एंड अदर्स. Foreign assets of commercial bank consist of foreign currency holding and rupee overdraft to non-resident. जैसे if our banks, can they have foreign currencies with them? Can they have foreign currency with them? That is their foreign asset. Similarly, they may have given rupee overdraft to non-residents. Non-residents may have borrowed money. Overdraft is what? एक तरह से borrowing. They may have given rupee overdraft. Is that also asset for them? बैंक के लिए एसेट होगा. Yes. This will earn them money. This will help them get interest and all. That's an asset. So this is foreign assets of commercial banks. अब देखो foreign assets commercial bank का increase हो रहा है. तो what would be done? एक rupee overdraft to non-resident. Non-resident को आपने और ज्यादा rupee overdraft दिया तो means money has gone outside the country. Right? अब आते हैं foreign liabilities पे. Now foreign liabilities like बैंक के लिए liability क्या है? Deposits. बैंक के लिए liabilities are deposit, assets are loans, liabilities are deposits. तो बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं. अब हम जब डिपॉजिट कर रहे हैं फ्रॉम विद इन द कंट्री, दैट्स नॉट गोइंग टू इंपैक्ट माय बैलेंस ऑफ पेमेंट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज इंटरेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Am I talking about that? India's interaction with rest of the world. That is what we want. So here, when we are talking about liabilities, और ये हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो बैंक में पैसा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बैंक में डिपॉजिट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आया बैंकिंग कैपिटल में फॉरेन लायबिलिटीज वाले कॉन्सेप्ट में. नाउ non-resident deposit, the deposit received from non-resident Indians comes under this. At present there are three types of NRI deposit schemes which banks in India can run. Deposits coming from non-resident Indians may be non-residents may be coming to banks in India. अब जैसे अपने इंडिया वाले स्विस बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, ऐसे ही बाहर के लोग इंडिया में कुछ डिपॉजिट रख सकते हैं. कुछ इंडियंस ही होंगे जो अब इंडियन सिटीजन नहीं रहे, बट दे वुड वांट कि इंडियन बैंक में थोड़ा पैसा रख लो, वहां इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है. Those kind of things could be there. Now, these non-resident deposits can be categorized into foreign currency non-resident deposit, non-resident external rupee account and non-resident ordinary rupee account. यहां पे डिपॉजिट कैसे होगा? फॉरेन करेंसी. Foreign currency, these deposits are held in the following foreign currencies: US dollar, pound sterling, euro, Japanese yen, Australian dollar and Canadian dollar. And only term deposit of 1 to 3 years is allowed in this case. Foreign currency non-resident deposit. तो एक non-resident Indian है या एक simply non-resident है, he wants to have a bank account in India. If he wants foreign currency non-resident deposit, he will bring any of these currencies and he can only put it in term deposit. Term deposit of 1 to 3 years of maturity. Term deposit of 6 months bhi nahi, term deposit of 3 months bhi nahi, saving account nahi, current account nahi. What is allowed? Term deposit of 1 to 3 year
period of maturity. What will be the interest rate? Interest rate is also pegged with LIBOR. LIBOR is London Interbank Interest Offered Rate. Interbank में जब तो it is a benchmark interest rate at which major global banks lend to one another. When banks lend, interbank lending होती है तो at rate at which banks lend to each other, that is the interest rate that will be applicable on foreign currency non-resident banks deposits. बात समझ में आई? Second is non-resident external rupee account. Here the deposits are denominated in rupee. These deposits are held in Indian rupees. पुराना वाला deposit that was held in foreign currency. This is held in Indian rupee. Term deposit with maturity of 1 to 3 years is allowed. Plus saving deposits are also allowed. When your deposit is in rupee, term deposit is allowed, saving is allowed. Then non-resident ordinary rupee account. Now ordinary rupee account ये क्या फंडा है? Let's say Ankit is working in India and have a bank account in India. Now Ankit eventually moves to Dubai and Ankit settles there. Ankit becomes a resident of Dubai. He has a bank account here. Now he is no more a resident of India. So his bank account will be converted into non-resident ordinary rupee account. So here he can have current account also. Here he can have saving account also. Here he can have the term deposit account also. Current account was not possible in the previous cases, but in this case it is possible because here this is an ordinary account. It is an account held by Indians ordinarily living abroad. An Indian who was an Indian resident but migrated abroad can shift this account to this category. It is held in Indian rupees. It can be opened in current, saving, recurring or fixed deposit. तो देखो facilities बढ़ती जा रही है. In the first case, foreign currency वाले में only term deposit. In the second case, term deposit as well as saving deposit. Here you will also see current deposits. तो फॉरेन करेंसी वाला जो डिपॉजिट है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट FCNR बैंक्स, ओनली व्हाट इज अलाउड? व्हाट इज अलाउड? टर्म डिपॉजिट्स. जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है, ऑर्डिनरी नहीं, एक्सटर्नल, व्हाट इज अलाउड? टर्म डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट. नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट है, हेयर एवरीथिंग इज अलाउड. समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? तो बैंक का जो लायबिलिटी है, बैंक में जो डिपॉजिट्स है, इफ दे इंक्रीज, मोर मनी विल कम टू इंडिया. इफ दे इंक्रीज, विल मोर मनी कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड? आर वी गेटिंग इट? If it decreases, money is going out of India. So what would we want? We would want this to increase and then more money will come to India. Okay. Then there are some others also. देखो, हम जब banking capital की बात कर रहे थे तो there were three components. Foreign assets of commercial banks, foreign liabilities and others. What is included in others? Others ऐसी miscellaneous चीजें हैं. Others under banking capital include transactions and balances of foreign central banks and international institutions like IBRD, IDA, ADB, IFC, maintained with deposit account departments of RBI, as well as transactions and balances held abroad by embassies of India in London and Tokyo. So basically, ये जो entities हैं, they may have a deposit account with RBI. In that, if money is increasing, money is decreasing, means money is coming within the country, money is going outside the country. That is included under the heading of others. ये भी banking capital में, RBI में account है, but ये भी banking capital का part है. Similarly, transaction and balances held abroad by embassies of India in London and Tokyo. London और Tokyo में जो banks हैं, वो वहां पे अपनी embassies होंगी. They may have some account there. And transaction there may also be impacting. क्योंकि जो embassies हैं, embassies are part of Indian territory. वो जो transaction कर रहे हैं rest of the world से, that may also be considered here. Then we have investments. Investment में FDI, FPI, foreign portfolio investment. Foreign portfolio investment is in listed company. Foreign direct investment is in unlisted company. We will study FPI, FDI बहुत सारी डिटेल में, तो यहाँ पे मैंने उन्हें थोड़ा भी नहीं समझाया, आपको रफली बता दिया है. Then there is other capital flow.
तो कई बार delayed export receipt, you had exported something in some year but the money did not come, money has come now. Or lead and lag in export receipt, the difference between custom data and banking channel data, funds held abroad and other capital transaction not included elsewhere, such as flow arising from cross-border financial derivative, commodity hedging transaction, sale of intangible assets such as patents, copyright, trademark. पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क का सेल कर दोगे तो कहां जाएगा ये? कैपिटल अकाउंट में. बट कैपिटल अकाउंट में कहां डालें? तो इसे अदर्स वाली कैटेगरी में डालते हैं. तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज व्हाट? कैपिटल अकाउंट बैलेंस में वी हैव लोन्स, वी हैव बैंकिंग कैपिटल एंड अदर आउटफ्लोस, नेट आउटफ्लोस इनफ्लोस. तो कैपिटल अकाउंट्स, अगर कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, it means capital account surplus means capital account balance is positive. Capital account deficit में है, it means capital account is balance is negative. ये बात समझ में आई? Then errors and omissions can be there. तो overall balance is current account balance plus capital account balance. So if balance of payment is positive, it would lead to increase in foreign exchange reserve, and if balance of payment is negative, it will lead to decrease in foreign exchange reserves. समझ में आ रही हैं चीजें? पक्का? तो each and everything which is there in the first table, वहां जाके देखो उस टेबल में जितनी चीजें थी, now we understand it and now can we revise using that table only? Each and every term, what constitutes what? ये सब लोग कर पा रहे हैं? Let's go to we'll study FDI FPI, but थोड़ा ना फॉरेन एक्सचेंज और इन सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं. Let's first come to that. First, let's come to forex reserves. Balance of payment surplus में हो रहा है तो we said forex reserve is increasing. Balance of payment negative में forex reserve is decreasing. What is forex reserve? What constitutes of forex reserve? So when we talk about forex reserve, there are four components of forex reserve in India. इंडिया के forex reserve के चार components होते हैं. First is foreign currency assets. Directly अपने पास जो डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, these are international currencies. ये currencies कितनी है? These will constitute our forex reserve. So this will constitute our foreign currency asset. Our forex reserves have four components. When we talk about forex reserve, we talk about four components. One of the component is what? Foreign currency asset. आपके पास कितना foreign currency रखा हुआ है? It also includes foreign currency deposit held by RBI with foreign central banks, the BIS and non-resident deposit taking institutions, as well as deposit agreements with IMF trust accounts that are readily available to meet BOP financing needs. So we have some forex reserve physically available with us. Fine. We have some forex reserve foreign currency physically available with us. Plus RBI का क्या है? Deposit है in foreign central banks. Now those monies are also available to deal with our crisis situation. So that is also part of our forex reserve. Securities issued by non-resident and financial derivatives having underlying foreign currency asset also form part of foreign currency assets. अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? Securities issued by, जैसे मान लो किसी नॉन रेजिडेंट ने बॉन्ड इशू किया था, किसी नॉन रेजिडेंट ने बॉन्ड इशू किया फॉर $1 million and I gave him $1 million का लोन. I gave him $1 million. तो will this also be part of our forex reserve? Yes. Securities issued by non-resident and financial derivatives having underlying foreign currency asset. Underlying क्या है? $10 million है. Also form part of foreign currency asset. That will also be part of our foreign currency asset. So foreign currency asset में क्या है? एक तो simply foreign currencies that we have in RBI. RBI के पास जो stored है foreign currency. Then RBI may have given some loan or may have some deposit in foreign countries. That is there. And ऊपर रख दीजिए, ऊपर रखिए, यहाँ पे. Then
This is very important. Securities issued by non-resident and financial derivatives having underlying foreign currency assets. These securities are also telling us कि we have $1 million or more. वो हमने लोन में दे रखा है, but वो हमारा ही है. That's also part of our foreign currency assets. Then gold held by RBI. RBI has gold stocks as a backup to issue currency and to meet unexpected balance of payment problems. That is also, gold is also part of our forex reserves. Then we have reserve tranche and special drawing rights. Now ये अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे when we study IMF, international bodies में. अभी briefly समझाते हैं. IMF, International Monetary Fund, what it does is it helps countries which is in balance of payment crisis. Now, how does it fund it? It funds it using funds provided by member countries. So India also has a tranche, a component that India has to provide. To whom? To IMF. Now, उसमें से some money has to go in forex. Some money has to go in domestic currency. तो वो जो tranche है, वो जो component है which we are providing in forex reserves to IMF, that is part of our foreign exchange reserve. हमने IMF को दे रखा है, but वो हमारा ही है ना. That is also part of our foreign exchange reserve. Got it? पहला part. Second is, we are member of IMF. In case of crisis, can we take loan from IMF? तो जो हमारा amount of loan that we can take from IMF is also part of our forex reserve because that will be available to deal with our crisis. So, special drawing rights holding of the government. The IMF member countries are entitled to get a loan from IMF SDR account. This loan amount is up to 200% of the members' quota with the IMF. हमारा जितना quota है, that is what we have to contribute to IMF. उसका that component that we have to contribute in foreign currency is reserve tranche. That is part of our forex reserve. Plus, because we are contributing, let's say our quota is 100 crore rupees. When our quota is 100 crore rupees, in emergency we can get a loan of up to 200 crore rupees. That loan that we'll be able to get in foreign currency is also part of our forex reserves. So, forex reserve में we have said broadly चार चीजें. One, foreign currency assets. Like foreign currency that we have, RBI has some deposit accounts in other foreign countries, foreign banks, and then security derivatives that we may have, which are denominated in foreign currency. ये हुए मेरे foreign currency assets. Then I have gold. Then I have reserve tranche. Reserve tranche is that component of my quota that I have paid in forex reserve. देखो IMF नहीं, फिर से समझो. IMF को ना, IMF बोले इंडिया तुम्हारा कोटा 100 crore rupees है, यहाँ 100 crore dollars है. So I do not have to give 100 crore dollars to IMF. 25% of it has to be given in foreign currencies. 75% of it has to be given in domestic currencies. तो जो foreign currency वाला tranche is a part of it. तो जो foreign currency वाला part है ना, that is part of our forex reserve. Not the entire tranche. And entire tranche में there is some money in domestic currency also, no? It is the entire foreign currency that's it is the component which we have given in foreign currency. That is our money that we have given to IMF. And then we can take loan from IMF. During emergencies, can we take loan from IMF? The loan that we can take from IMF is also part of our forex reserve. Loan that we can the IMF member countries are entitled to get a loan from IMF SDR account. This loan amount is up to 200% of our quota. It is also known as paper gold, and that's also part of our forex reserve. बात समझ में आ रही है सबको? बताइए. जो SDR का लोन लेंगे, वो 200% ऑफ रिजर्व ट्रांच होगा या कोटा का होगा? कोटा का. हमेशा कोटा, जितना आपका कोटा है उतना लोन ले सकते. यस. कर देते हैं, अपने कोटा के बियॉन्ड भी कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट फंड्स टू हेल्प डिफरेंट कंट्रीज. कोटा तो इज द कंपल्सरी थिंग व्हिच एवरी कंट्री हैज टू कंट्रीब्यूट. Other than this also there are various funds which are there which may be needed. वहां पे हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं. जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए और भी फंड्स वगैरह बने हुए हैं, वहां पे हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं. ओके, तो आपसे पूछे कि फॉरेक्स रिजर्व्स कितना है इंडिया का, क्या है इंडिया का, तो व्हाट विल यू से? फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है? ये चारों चीजें आती है.
बस फॉरेन करेंसी जो आरबीआई होल्ड करता है वो नहीं आता, सिर्फ फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स भी है, गोल्ड भी है, our reserve currency component is also there, and what is also there? The loans that we can get from IMF. Up to 200% of our quota is the loan that we can get from IMF. That is also included there. Okay. Now, who manages Forex Reserve? तो RBI Act and Foreign Exchange Management Act RBI को responsibility देता है for managing our Forex Reserve. Who's the manager of Forex Reserve in India? It is Reserve Bank of India. It is function as custodian and manager of Forex Reserve and operates within the overall policy framework agreed with the center. It allocates dollars for specific purpose. For example, under liberalized remittance scheme, individuals are allowed to remit up to $2,50,000 every year. तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या है कि आप इंडिया से बाहर कितना फॉरेक्स लेके जा सकते हो, for what purpose, like for education purpose, for other purpose, कितना रेमिटेंस आप कितना लेके जा सकते हो, तो that limit is $250,000 है ना, 250,000 इतना पैसा लेके, इससे ज्यादा नहीं। आप पढ़ने जा रहे हो, टूरिज्म के लिए जा रहे हो, इससे ज्यादा पैसा लेके नहीं जा पाओगे, बिकॉज that can negatively hamper our forex reserves, no? तो उसमें रेस्ट्रिक्शन है। एज सेंट्रल बैंक यूजेस इट्स फॉरेक्स किटी फॉर ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ रूपी। अभी रूपी डिप्रिशिएट हुआ है बहुत सारा, तो रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है बिकॉज डॉलर का सप्लाई कम है, तो आरबीआई स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ डॉलर्स आल्सो। सितंबर 2024 में आर फॉरेक्स रिजर्व वर हाईएस्ट एवर, नाउ इट हैज कम डाउन टू 10 मंथ लो। अभी 10th of January को जो आरबीआई ने नंबर दिए थे उसमें इट इज अ 10 मंथ लो। व्हाई? बिकॉज आरबीआई स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ डॉलर्स टू मेक more dollar availability in our economy so that rupee will not keep on depreciating. Dollar थोड़ा सा depreciate हो and rupee does not keep on depreciating. Okay, so who is responsible for foreign exchange management in India? RBI. दो एक्ट है, फेमा एक्ट है as well as RBI एक्ट है which is giving responsibility to RBI. RBI also makes rules कि कितना फॉरेक्स रिजर्व बाहर जा सकता है in the form of remittance etc. RBI also decides when would I spend dollars, when would I buy dollars. अभी ऐसा हो ना कि मान लो रुपी अप्रिशिएट्स एंड डॉलर डिप्रिशिएट्स, डॉलर मान लो 80 पे आ गया, तो RBI will start buying dollars. When it starts buying dollar, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, when it is selling dollars, फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है। क्या था? हाँ, अच्छा समझ में आ गया, इसलिए समझ लिया। Are we comfortable here? Now, why forex reserves are crucial? Why forex reserves are important? Sir, please again explain security issue. बेटा सिक्योरिटी इशू किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा, एक बार बता दो मुझे भी। फॉरेक्स रिजर्व में सिक्योरिटी, अच्छा बेटा सपोज कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है, ऐसे सोचो माइक्रोसॉफ्ट, जैसे अभी तक हम बॉन्ड्स इशू करवाए थे रिलायंस से, माइक्रोसॉफ्ट हैज इशूड बॉन्ड्स एंड यू हैव इन्वेस्टेड इन दोस बॉन्ड्स, यू हैव इन्वेस्टेड इन दोस बॉन्ड्स, मतलब यू हैव गिवन माइक्रोसॉफ्ट $10,000, फॉरेन करेंसी में है वो, दैट्स आवर मनी that we can get back. That is what is being talked about. Okay. Significance of forex reserves. Why forex reserves are crucial? देखो एक तो इसलिए क्रूशियल है कि जब रूपी डिप्रिशिएट हो रहा होगा विल बी एबल टू reduce the volatility of rupees. Fine, वो तो is going on right now. But there are other factors also. It acts as cushion against domestic. अच्छा ये तो सबसे पहला फैक्टर है, domestic currency volatile होगा तो it will act as cushion against it. Do we understand this first one? Each one of us is able to understand this. Second, it increases the confidence in the monetary and exchange rate policy of the government. How? देखो, monetary policy of the government. Sometimes there may be a shortage of money in the economy. So RBI will try to increase money supply.
RBI will try to increase money supply when there is shortage of money. If RBI has a lot of forex reserve, people will trust RBI more, its policies more. और ऐसे समझो, suppose there is increased money supply in the economy, बहुत सारा पैसा आ गया, a lot of foreign investment happened, that will also lead to increase in money supply. At that time, RBI will buy a lot of forex reserve. Can RBI buy a lot of forex reserve? Right. The point is कि when RBI has a lot of forex reserve, trust on it is higher. Trust on the entire economy is higher. If in this economy, if this government is taking loan, it is not going to default. Why? इनके पास forex reserve है काफी. They're not. Just we say that at the time in 1991 when we were facing the financial crisis, our forex reserve had become so small that we could import cover was of 7 days or so. कुछ वैसा. Today our forex reserve are so big that our import cover is of 11 months. हमारा forex reserve इतना है कि हम जो चीजें import करते हैं ना, up to 11 months we can keep importing them. We have that much money. Okay, then during balance of payment crisis, foreign exchange reserve come to the rescue of any country so as to absorb the distress related to such crisis. Balance of payment crisis क्या है? Balance of payment crisis is like you have a huge deficit. When you have huge deficit, means foreign currency is going outside the country. तो जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे हो और फॉरेन करेंसी इज गोइंग आउटसाइड द कंट्री, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, विल इट बी गुड? Will it be good? A strong forex reserve also help country to adapt more aggressive counter-cyclical measure and emerge from a short-lived recession. कैसे? Suppose recession आया है. If we have a lot of forex reserves, can we put it in the economy? Yes. It also adds to comfort of market participants, foreign investors who wants to invest in India. ऐसे सोचो कि suppose RBI did not have forex reserve and मैं यूएस में बैठा हूं, मैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं and I'm buying one Reliance share in, let's say, 1,000 rupees. I'm buying one Reliance share in 1,000 rupees. Now I'm worried कि यार ये 1,000 rupees currently is, let's say, $10 for me. $1 is, let's say, 100 rupees. 1,000 rupees is $10 for me. I bought it in $10. But tomorrow, if the rupee depreciate, तो 1,000 rupees will only be $8 or $7. मेरा तो लॉस हो जाएगा. But if I know, अच्छा, their RBI has a lot of money, lot of forex reserve, they'll be able to control depreciation. Will I be more comfortable? ये रुपये को इतना depreciate नहीं होने देंगे. If RBI has enough forex reserve, will RBI be able to control the slide of rupee? Will RBI be able to control the slide of rupee? If अगर RBI के पास forex reserve होते नहीं, अभी रुपये गिर रहा होता, क्या RBI कुछ कर पाता? तो RBI will be able to control the slide of rupee. So foreign investors are more comfortable in countries where central bank has a lot of forex reserves. ये क्लियर हुआ बात? समझ में आया? Okay. Other aspects related to forex reserve. अब देखो, holding a lot of forex reserve sometimes is also criticized. It's something like I always give this example कि एक household है, let's say. In that household, they have a lot of gold. They have a lot of gold. Reserves के form में है. और वो gold reserves बढ़ा भी रहे हैं हमारे. But in the same household, some people are not able to get food. Some people are not able to get good education. So if you keep on increasing your gold and are not focusing on infrastructure improvement, etc., this can be problematic. So there has to be a balance. Balance in what? Balance in कितना reserve रख रहे हो, कितनी की जरूरत है, and if you have excess, try to fulfill the basic requirement of infrastructure, education, health. That will also give you better returns in future. These things are going to give you better return in future. So while it is important, we have understood forex reserves are crucial. We have understood reasons for it, but forex reserve also come with opportunity cost. अब ये forex reserve जो हमारे पास है, हम मान लो इसे schools में लगा देते, इसे R&D में लगा देते, तो it could have benefited us. So there is a balance that we'll have to maintain. How much reserve do we have? Abhi, currently, what reserve do we have? So as of 10th of January 2025, India's forex reserve was
is at $625 billion. अब ये number is not that important. Perhaps April में के जो number रहेंगे वो थोड़ा सा पता हो तो ठीक है. This number is not very important, but our forex reserve had peaked in September 2024 at $705 billion. उसके बाद जैसे रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, what we have tried to do, we have tried to sell dollars, increase the supply of dollars, ताकि रुपी dollar depreciates and rupee can be, or rupee does not fall so much. The import तो sorry, as of 10th of Jan 2025, India's forex reserve is $625 billion. It at one time, how much was it? $700 billion. Abhi it has reduced. It is a 10-month low and has dropped for 6th year in a row. In last 10 months, सबसे छोटा reserve कितना है हमारे पास? ये है. And since last 6 weeks, it has been falling because rupee has been depreciating. RBI has been spending dollars for that. Then, so why has rupee depreciated recently? Why have forex reserve reduced recently? Because of RBI's intervention to curb sharp depreciation of Indian rupee. Now, what are the हमने बोला था forex reserve के कौन-कौन से components होते हैं? Foreign currency assets, gold reserves and SDR. वो tranche और SDR को एक साथ लिख दे रहे हैं. So these are the three components. How much foreign currency asset do we have? $536 billion. How much gold do we have? $67 billion. And SDR of around, SDR is IMF से आप कितना लोन ले सकते हो या IMF के ट्रांचे में आपने कितना कंट्रीब्यूट कर रखा है, वो सारी चीजों को we are writing as SDR, that is $22 billion. Right now, how much is the forex reserve that we have? 642. कितना था अभी? 625. Do these things add to 625? 7 2 9 6, हाँ रफली इतना ही हो रहा है. Got it? Okay. एक और टर्म समझो, इंपोर्ट कवर क्या होता है? इंपोर्ट कवर ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व इज, आप जितना इंपोर्ट करते हो, आपका फॉरेन करेंसी कितने महीने का इंपोर्ट कवर कर सकता है. फॉरेन रिजर्व्स, द रिजर्व्स दैट यू हैव, इट कैन इंपोर्ट फॉर यू फॉर हाउ मेनी मंथ्स. तो करेंटली सपोज इंडिया स्टॉप्स गेटिंग एनी मनी फ्रॉम एनीवेयर, इंडिया का सारा एक्सपोर्ट बंद हो जाए, सब बंद हो जाए, तब भी द फॉरेक्स रिजर्व्स दैट वी हैव, उससे विल बी एबल टू मेक इंपोर्ट्स ऑफ हाउ मच? 11 months. We'll be able to make imports for 11 months. But recently this cover has come down. In March 2024, 11.3 months था, अब वो 11.2 months रह गया. तो import cover can fluctuate, so it is also showing a fluctuate, or import cover will reduce. Please understand, अभी और भी कम हो गया होगा. This is number for June 2024. Now, our imports may be going up, and what may be coming down? Our forex reserve are coming down. The import cover may have gone down further, but again, अब Economic Survey of India आएगा, वो it will give you the data for January 2025. 31st को आने वाला है, 31st को आने वाला है Economic Survey of India, so it will give you some data related to that. तब कर लेंगे. But do we understand what is import cover? आपके forex reserve से आपके कितने टाइम का import can be taken care of. तो अभी हमारे 11.2 months का import can be taken care of. Our 11.2 months import can be taken care of by our forex reserve. In June 2024, that was the scenario. The number may have come down slightly as our this thing is reducing, as our forex reserves are reducing. Now, I had 2-3 years back, I had read an article. मुझे बहुत अच्छा लगा था in explaining some basic concepts. ये क्या हो गया? They were talking, I have already explained that to you. देखो, China, when it comes to China has increased its forex reserve. How has it increased it? By increasing its exports, है ना, current account surplus. But India में जो forex reserve increase हुआ है, it has primarily happened because of capital account surplus, and it's visible here also. देखो, 1990 में हमारा रिजर्व ऑलमोस्ट खाली हो गया था, और if you come to 2021-22, 1991 से 1997-98 तक ट्रेड बैलेंसेस माइनस. ट्रेड बैलेंस माइनस में दिख रहा है आपको? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट.
export is 207, import is 279, minus invisible plus capital flow 57.887. तो ओवरऑल बैलेंस कितना है? पॉजिटिव। ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव हुआ तो एंड देन वैल्यूएशन इफेक्ट वाज आल्सो देयर। अच्छा, व्हाट इज वैल्यूएशन इफेक्ट, डू वी अंडरस्टैंड? जैसे गोल्ड है हमारे पास, तो जब गोल्ड सस्ता था तो गोल्ड वाज वर्थ लेस डॉलर्स, पर जब गोल्ड महंगा हो गया तो गोल्ड इज वर्थ मोर डॉलर्स। दैट इज वैल्यूएशन इफेक्ट। तो नाउ जैसे इफ आई हैव 1 kg ऑफ गोल्ड, 1 kg of gold at one time was of 30 lakh rupees. Today it is of 90 lakh rupees. तो मेरे रिजर्व्स बढ़ गए? ऐसे आरबीआई आल्सो हैज गोल्ड, एंड इफ आई हैव टू से इन डॉलर्स, जैसे हमने अभी बोला गोल्ड वर्थ 22 बिलियन डॉलर्स वी हैव। if you come to, नहीं, we said this, no, we have, नहीं, gold of 67 billion dollars, gold of 67 billion dollars we said, because gold prices increased it became 67. The same gold may have cost 60 billion dollars, the same gold may be worth 30 billion dollars also कभी, है ना? तो क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है, सेम गोल्ड हैज बिकम 60 बिलियन डॉलर्स का, राइट? आर वी गेटिंग इट? तो इफ आई कम हियर, बिटवीन 1991 टू 97 98 अपना ओवरऑल बैलेंस वाज 22 बिलियन डॉलर्स, 22.9, तो आवर फॉरेक्स रिजर्व वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 22.9 बिलियन डॉलर्स, बट वैल्यूएशन इफेक्ट की वजह से 2.4 बिलियन डॉलर का भी इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल इंक्रीज वाज 25 billion dollar, then 122 billion dollar, then 152 billion dollar, then 303 billion dollar. But in all these cases, our trade balance is negative. Our current account balance is almost negative all the time. So why has our forex reserve increased? It has increased because of capital account surplus. Capital account surplus. That is why. So like some students are asking कि sir ये हम लोन लेके एफडीआई करा के एफआईआई करा के जो पैसा ला रहे हैं वो तो इन फ्यूचर जा भी सकता है ना, जा सकता है, ठीक है, बट विदाउट इट वी आर इन अ लॉट ऑफ क्राइसिस, एंड दैट इज व्हाई वी ट्राई टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। सर व्हाट विल बी द टोटल फॉरेक्स रिजर्व विद रिस्पेक्ट टू आईएमएफ? बेटा कोटा का ट्रांच है, कोटा पूरा नहीं, कोटा का ट्रांच जो हमने फॉरेक्स, देखो जो जितना अपना कोटा है ना उसका सम पार्ट हैज टू बी गिवन इन फॉरेन करेंसी एंड सम पार्ट हैज टू बी गिवन इन डोमेस्टिक करेंसी। तो जो हमने फॉरेन करेंसी में जो पार्ट दिया है ट्रांसे का मतलब ही है अपने पूरे रिजर्व का ट्रांसे कंपोनेंट, एंड देन 200% ऑफ आवर कोटा दैट विल कैन गेट इन द फॉर्म ऑफ एसटीआर। राज मनोज कुमार इज आस्किंग सर एनी लिमिट ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ? वही तो था बेटा अभी 200%, वही तो बताया ना, एंड देन फिर यू कैन हैव अ डील इमरजेंसीज में, वो सब भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड ऑल। Did we understand this aspect? Okay. Let's go to exchange rate. Let's understand fundamentals of exchange rate and all. आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ? टुडे आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, तो मेरे को शायद मैं उस एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कुछ आपको? नहीं, छोड़ नहीं रहा छोड़ नहीं रहा, छोड़ना स्कोप नहीं है, वी हैव टू फिनिश इट ना बेटा। मैंने कल बोला मैं आपको कुछ, देखो इफ आई गेट मोर टाइम आई विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। मैं क्योंकि और मेहनत, मैं मेरे को मोर टाइम मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमने चला जा रहा हूं, जब तक आपका एग्जाम है पूरी जान लगा के आपके साथ काम कर रहे हैं। आई एम देयर, क्योंकि मैं इसके बाद भी बोला करंट अफेयर्स अपडेट, आपका पीएमपी खत्म, जो पीएमपी वाले बच्चे उनका पीएमपी खत्म भी हो जाएगा, करंट अफेयर्स अपडेट तो मैं करके दे रहा हूं ना। इफ आई गेट मोर टाइम I'll be able to do more PYQs with you. I'll be able to do more MCQs with you. I'll make some MCQs myself. है ना? तो थकना अलाउड है पर रुकना अलाउड नहीं है। तो वो आप सबके लिए भी, थक जाओगे कभी कभी बट कीप ऑन वर्किंग, टेक सम रेस्ट, कीप ऑन वर्किंग। ये नहीं कि सर आज थक गए, आज क्लास नहीं, क्लास तो करनी ही है। गो होम, रेस्ट अ बिट एंड देन पढ़ने बैठो, वॉक करके आओ, एक्सरसाइज करो, पढ़ने बैठो, 6-7 घंटे सो, पढ़ने बैठो, वो करना पड़ेगा।
उसके बिना कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया में कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं इस एग्जाम के लिए, and very few of, even in this classroom, very few of you are going to clear pre. जो सबसे सिंसियरली पढ़ रहे हैं, सबसे सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं, वो क्लियर करने वाले, सब नहीं करने वाले हो। 100% सिलेक्शन गारंटी का बोर्ड लगा के नहीं बुलाया तुम्हें, स्कैम नहीं करा है ना, तो नॉट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू क्लियर इट। मैं चाहूंगा सब कर पाओ, पर सबको फिर इक्वल इंटेंसिटी से, इक्वल कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते हैं जीवन में, वो प्रॉब्लम है। तो सब करिए, सारे क्लियर हो जाएंगे। बट व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज, पीएमपी प्लस करंट अफेयर्स में जितना पढ़ाया जा रहा है, आप सिर्फ उसकी चीजें सही करके आ जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये बता सकता हूं। हम इतना पढ़ाएंगे, ये हमें पता है, हम इतनी मेहनत करेंगे कि जो पढ़ाया गया है, जो आपके नोट्स में चीजें हो, क्योंकि आप अभी पीएमपी और जीएस फाउंडेशन वाले बच्चे ना, तो जीएस फाउंडेशन में जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं, करंट अफेयर्स में जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है, वो सारी सही करके आ जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आई कैन प्रॉमिस यू। व्हाई कैन आई प्रॉमिस यू दैट? क्योंकि मुझे पता है क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जो पीएमपी वाले बच्चे, पीएमपी में आपको प्री के लिए जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है, प्लस करंट अफेयर्स में जो पढ़ाई जा रहा है, पढ़ के आओ, अच्छे से करके जाओ, यू विल सी सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये करके, जो पढ़ाया है वो गलत करके आओगे तो फिर हाउ कैन आई गारंटी सिलेक्शन? तो 100% गारंटी इसलिए नहीं होता क्योंकि आई डू नॉट नो अबाउट योर कमिटमेंट, है ना। तो थक सकते हो, बट पढ़ना है। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस एक्सचेंज रेट। और जो लोग बोलते हैं ना 100% सिलेक्शन गारंटी, उनसे पूछो मैं नहीं पढ़ा तो क्या होगा। 100% सिलेक्शन गारंटी कैसे दे देते हैं फर्जी लोग। ओके, बेसिक्स ऑफ एक्सचेंज रेट, हिस्ट्री की रिमेनिंग क्लासेस और आर्ट एंड कल्चर की निखिल सर की क्लास बेटा हो जाएंगे। आर्ट फाउंडेशन वालों को आर्ट एंड कल्चर निखिल सर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, विशाल सर पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को निखिल सर वाली क्लासेस करनी है। बेटा ओमी सर को एक बार मैसेज कर देना, वो आपको एक्सेस दे देंगे, आपको करनी है तो, है ना। वैसे विशाल सर वाली क्लासेस कर लो, दे आर गुड, दे आर एक्सीलेंट। वो कम उसमें सारी चीजें करा देते हैं, दैट्स गुड इनफ। आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन में विशाल सर एंशिएंट मिडिवल कल्चर पढ़ाते हैं, निखिल सर मॉडर्न पढ़ाते हैं। पर दोनों को हिस्ट्री से प्यार है, तो पीएमपी में बोलते नहीं मुझे दूसरी चीज पढ़ानी है। पीएमपी में निखिल सर पढ़ाते हैं एंशिएंट मिडिवल कल्चर, विशाल सर पढ़ाते हैं मॉडर्न। हमारे, क्योंकि बोथ द टीचर्स लव देयर, उनके लिए आराम करना होता तो क्या करते, वो एक ही चीज पढ़ा रहे होते, यहाँ पे भी एंशिएंट मिडिवल कल्चर, यहाँ पे भी एंशिएंट, बट बोथ द टीचर्स लव देयर सब्जेक्ट सो मच, दे लाइक नहीं हमें पूरा पढ़ाना है। we want to study the whole history and we want to teach the whole history. Let's come to this basics of exchange rate पे आते हैं। हमने फॉरेक्स रिजर्व समझ लिया। फॉरेक्स रिजर्व, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, who manages forex reserve, how much is India's forex reserve, why forex reserve is important, India's forex reserve has increased because of what factors, it can increase for any of the reasons which may lead to our balance of payment surplus। हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है, तब भी हो सकता है, हमारे सर्विसेज इनविजिबल्स कैन बी हायर, तब भी फॉरेक्स रिजर्व कैन इंक्रीज, राइट। इट कैन इंक्रीज फॉर मेनी रीजंस, बट in India, why has it primarily increased? It has primarily increased because of capital account surplus, not because of current account surplus. ये भी clarity है। Now, let's come to exchange rate. Let's understand the fundamentals of exchange rate. What is exchange rate? Exchange rate is price of domestic currency with respect to a foreign currency, right? हम डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के टर्म्स में लिखे या फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी के में, जैसे व्हेन वी से $1 is equal to 90 rupees, what are we writing? We're writing exchange rate, we're writing exchange rate. So what is exchange rate? Exchange rate is the price of a nation's currency in terms of another currency. Thus an exchange rate has two components, domestic currency and foreign currency, and can be quoted either directly or indirectly. What is direct? हम exchange rate का direct quotation किसे बोलते हैं? When price of a unit of foreign currency is expressed in domestic currency. This is what direct exchange rate. Direct exchange rate. We could have also written it as 1 rupee is equal to 0.0
81 9 90 अरे कुछ भी fine $0.09. We could have also written this in this way. It is called indirect exchange rate. तो समझो it is direct exchange rate we generally use. India में what do we use generally? Direct exchange rate $1 is equal to this many rupees. तो हम एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. That exchange rate mechanism is direct quotation mechanism. The price of a unit of foreign currency is expressed using domestic currency. $1 is equal to 80 rupees is what? Direct exchange rate or direct quotation mechanism. Indirect quotation mechanism is price of a unit of domestic currency is expressed in terms of foreign currency. 1 rupee is equal to $0.0125. ये क्या लिख दिया मैंने? Dollars. 1 rupee is equal to $0.0125. This is what? Indirect. This is what? Indirect quotation. So exchange rate representing domestic currency in terms of foreign currency. When one unit of foreign currency is represented in domestic currency, what is it called? Direct quotation method. And what do we use generally? In India, we use direct quotation method. US में जाओगे, US में भी they'll say $1 is equal to 80 rupees. They're using what method? Indirect quotation. उनके लिए their domestic currency, one unit of domestic currency is being presented in the form of foreign currency. So that will be indirect. हम क्या यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट कोटेशन मेथड. तो डायरेक्ट इससे ना आप याद भी रखोगे हमेशा. डायरेक्ट कोटेशन इज व्हाट? डायरेक्ट कोटेशन इज व्हाट वी यूज. डायरेक्ट कोटेशन इज व्हाट डायरेक्टली comes in our head. $1 is equal to 80 rupees. या $1 is equal to 90 rupees. This is direct quotation. Okay. Generally, when we quote exchange rate, we quote it in terms of US dollar, but anything could be used. We can use Japanese yen, we can use Canadian dollar, we can use Australian dollars, we can use euro, we can use sterling, we can use pound sterling. Any of the currency could be quoted. तो जब भी हम direct quotation बोल रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे 1 pound sterling is how many rupees? 1 yen is how many rupees? 1 Canadian dollar is how many rupees? Right? Direct quotation method is that. Now, floating versus fixed exchange rate. What is it? देखो, $1 is equal to 90 rupees. ये तो अभी करंट सिनेरियो है. If we allow it to change, if RBI says कि नहीं, based on demand and supply, the exchange rate can keep on changing, then it is floating exchange rate. If our central bank says नहीं, $1 is equal to 80 rupees, भाई यही है अपना, then we are using which mechanism? Fixed. But what method are we using? Floating wala method we are using. We haven't fixed it as such. Some countries use fixed rate mechanism also. Means tranche plus 200% of quota. Yes, beta. Tranche plus 200% of quota. Sir, why sometimes RBI's intervention is criticized? Beta, क्या होता है ना? अब RBI's intervention sometimes is criticized for not being good enough. Sometimes it is being criticized for hampering the market forces. अगर रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो होने दो. जो एक्सपोर्ट कर रही है कंपनीज, उनके लिए एक्सपोर्ट बहुत सस्ता हो जाता है, उनको तो वो आरबीआई को क्रिटिसाइज करेंगे, व्हाई आर यू हैम्परिंग मार्केट. तो देयर आर मेनी रीजंस. बट ऐसे सोचो, विल दिस बी आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन? नहीं ना. तो ज्यादा इतनी क्यों टेंशन लेनी है? Subjective things are not asked in preliminary examination. Viewpoints are not asked in preliminary examination. Preliminary examination में आपसे पूछा जाएगा which of the following may lead to increase in exchange rate, or which of the following may lead to appreciation of domestic currency, depreciation of domestic currency. Understand those concepts.
बट हमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब समझ में आया? फ्लोटिंग वी अलाउ द एक्सचेंज रेट टू फ्लोट based on the demand and supply of the domestic and foreign currency. Fixed exchange rate में we would have fixed कि यार $1 is equal to 80 rupees, अब यही फिक्स्ड है, इसी के बेसिस पे सब काम करो. Now this system isn't good for an economy which wants to get integrated in the global system. Okay, then we also have some other terms. Depreciation and depreciation क्या है? Depreciation is increase in direct. देखो डायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्या है? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, डायरेक्ट कोटेशन मेथड क्या है? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, कितनी डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ रही है? दैट इज डायरेक्ट एक्सचेंज रेट. डायरेक्ट एक्सचेंज रेट इज द रेट दैट वी जनरली यूज, है ना? इंडिया में हम जो यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज कर, जो हमारे मन में आता है. Whenever you're asked what is the exchange rate of rupee, you say $1 is equal to 80 rupees. That is what you say. You never say कि 1 rupee में you can get $0.01. Have you seen ever anyone saying this $0.09? No, we haven't seen people saying this. What do people say? People say $1 is equal to 80 rupees. So what method do we use? Direct quotation method. So when I say rupee is depreciating, that will be increase in direct quotation. $1 is equal to 90 rupees. $1 is equal to 100 rupees. That is what it means. Rupee is depreciating. Depreciation, increase in direct exchange rate. Increase in direct exchange rate is depreciation. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे? Fall in the external value of domestic currency because of more demand for foreign currency. अब वो क्यों, रीजंस क्या है उस पे आते हैं, बट फर्स्ट पहली जो लाइन है ये सबको समझ में आनी चाहिए. क्या लाइन है? इंक्रीज इन डायरेक्ट एक्सचेंज रेट. इंक्रीज इन डायरेक्ट एक्सचेंज रेट इज डेप्रिसिएशन. और ये सोच भी पा रहे हो आप, पहले 80 rupees was able to buy $1. Now 90 rupees are needed to buy $1. Now 100 rupees are needed to buy $1. डॉलर का वैल्यू कम होता जा रहा है. दैट इज डेप्रिसिएशन. तो इंक्रीज इन डायरेक्ट एक्सचेंज रेट, डायरेक्ट कोटेशन इज डेप्रिसिएशन. सबको समझ में आ रहा है? कल पीवाईक्यूज करें, कल कुछ और भी क्वेश्चंस करा दूं पीवाईक्यूज के अलावा भी है? नहीं, पहले पीवाईक्यू के कमिटमेंट पे रुकते हैं, है ना? पीवाईक्यू का कमिटमेंट पूरा करते हैं पहले. करा तो नहीं, चलो टेस्ट में डाल दूंगा, बिकॉज नाउ आई हैव सम टाइम. अब आपको अगले वीक से मुझे साइंस पढ़ाना है. साइंस तो मैं ऑलरेडी टारगेट प्री में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे अलग से नोट्स बनाने हैं आपके लिए बैठ के. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मेरे पास थोड़ा सा बैंडविड्थ रहेगा, तो मेरी कुछ एमएमपी की क्लासेस पेंडिंग है, वो लूंगा. हाँ, तुम्हारी साइंस की नहीं सर, तुम्हारी एनवायरनमेंट की क्लास पेंडिंग है ना अभी. एनवायरनमेंट पेंडिंग है, इकोनॉमी के 1-2 टॉपिक पेंडिंग है, वो भी तो खत्म करना है बिफोर 15th Feb. तो हाँ, डिजिटल करेंसी वाला पार्ट भी करा देते हैं, राइट? सीबीडीसी, एक सीबीडीसी वाला टॉपिक इज वन थिंग दैट आपके नोट्स में बाकी सारे करेंसीज हैं. एक सीबीडीसी इज समथिंग दैट वी हैवंट कवर्ड. मैं पहले सोच रहा था सीबीडीसी जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, बिकॉज इट्स टाइप ऑफ दैट ओनली, तब कर देंगे. बट मैं कल कोशिश करता हूँ कल आपको सीबीडीसी के लिए भी एक छोटा सा हैंड आउट देके खत्म कर दें. बट डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन समझ में आया? अब डिप्रिशिएशन क्यों होगा? फर्स्ट लाइन इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. डिप्रिशिएशन क्यों होगा? डिप्रिशिएशन विल टेक प्लेस इफ मेरा सप्लाई ज्यादा है. इफ समथिंग इज इन ओवर सप्लाई, इट्स वैल्यू रिड्यूसेस. इफ समथिंग इज इन ओवर सप्लाई, इट्स वैल्यू रिड्यूसेस. और my depreciation can also occur if dollar is in under supply. डॉलर कम अवेलेबल है तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, मेरा घटेगा. और आई एम ओवर सप्लाई, दैट कैन ऑल्सो लीड टू माई डेप्रिशिएशन. तो रुपी डेप्रिशिएट कब होगा? मोर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और लेस सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, और मोर सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और लेस डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. यही फैक्टर्स है, घूम फिर के एवरीथिंग विल लीड टू दिस. When will depreciation take place? Depreciation, मेरा सप्लाई ज्यादा है, मेरा डिमांड कम है.
I'll depreciate. Or counterpart, its demand is higher, its supply is lesser. Dollar's supply is less or dollar's demand is higher, rupee will depreciate. Rupee's supply is more, rupee's demand is less, rupee will depreciate. Are we getting it? Depreciation कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है, ये समझो एंड यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां पे ना, एज आई कीप ऑन सेइंग कि एक्सटर्नल सेक्टर के भी सारे क्वेश्चंस विल फील लाइक अरे तो यार बहुत इजी है इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, बिकॉज आप वहां बैठ के सोच पाओगे लॉजिकली, रुपी बढ़ रहा है ना इससे, तो डिप्रिसिएशन, रुपी बढ़ रहा है तो डिप्रिसिएशन होगा, ओ रुपी कम हो रहा है डिप्रिसिएशन नहीं होगा, इस कारण से तो नहीं होगा, डॉलर इज इंक्रीजिंग डिप्रिसिएशन नहीं होगा, अप्रिशिएट होगा। इफ डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा तो रुपी विल अप्रिशिएट, डॉलर तो अब ऐसे सोचो, वी आर टेकिंग मोर एक्सटर्नल लोन्स, व्हाट इज दिस लीडिंग टू, इंक्रीज इन डॉलर सप्लाई, व्हाट विल इट लीड टू, अप्रिशिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, डॉलर का सप्लाई बढ़ेगा तो रुपी विल अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट, हर चीज में बस ऐसे सोचना हमेशा रैशनली, FIIs बढ़ रहे हैं, रुपी विल अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट, this will contribute to what, or rupee appreciate depreciate can happen because of multiple factors, but this thing will contribute to appreciation or depreciation, appreciation. FIIs बाहर जा रहे हैं, when they go out will they take dollars, they'll sell their stocks and they'll convert rupee into dollars and will take it, तो डॉलर कम हो रहा है रुपी बढ़ रहा है, रुपी will appreciate or depreciate, depreciate, rupee will depreciate. So when FIIs go out of India, rupee depreciates. When FII come to India, it contributes to appreciation of rupee. Everything is so connected, so simple. ये पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत आसान रहेगा. Okay, depreciation we have understood. So when rupee depreciation would mean that rupee falling from $1 is equal to 50 rupees to $1 is equal to 52 rupees. तो direct exchange rate बढ़ गया है, 50 से 52 आ गया है, but this is depreciation. Appreciation is what? Decrease in direct exchange rate. $1 is equal to 50 rupees से $1 is equal to 48 rupees. This is appreciation. When will I appreciate? I will appreciate when my demand is higher, my supply is lesser. When my demand is high, I can appreciate. When my supply is less, I can appreciate. Or foreign currency का demand is lower, supply is higher, then also I can appreciate. Okay, appreciation, depreciation समझ में आया? अब devaluation क्या होता है? Devaluation is kind of depreciation but done by interference. Reduction in the external value of home currency is called devaluation. Or you can say direct quotation mechanism में increase होना is devaluation. This is done to increase export and अच्छा इस पे भी आएंगे क्यों होता है, but devaluation or revaluation is different from depreciation and appreciation. Depreciation and appreciation takes place automatically based on market forces. Appreciation depreciation is happening through market forces, not with any interference. Due to movement in the demand and supply of currency in the market, if dollar demand exceeds supply, rupee depreciates with respect to it and vice versa. Devaluation and revaluation are done voluntarily either by government or by monetary authorities. जैसे China keeps on devaluing its currency. China अपनी currency को बहुत appreciate नहीं होने देता है. Why? Because it wants to promote exports. अब इसे ऐसे समझ, understand it in simple terms. Let's say $1 is 80 rupees. I'm making this pen in 80 rupees in India. है ना? I want to sell it in 80 rupees. So what am I selling it in? $1. है ना? अब suppose rupee appreciate हो जाता, $1 is equal to 50 rupees हो जाता. That is appreciation of rupee. So now I'm making this pen in 80 rupees. How much will I sell it in? 80 rupees. $50 is what? $1. 50 rupees is $1. So 80 rupees is $1.6. Earlier I was selling it in $1. Now I'll sell it in $1.6. Will they buy it? No. तो अगर rupee appreciate होता है तो मेरे export becomes expensive. But if rupee depreciates, think of how rupee is think of rupee depreciating. $1 is equal to 80 rupees. Fine. Rupee depreciate हुआ, $1 is equal to 100 rupees. Fine.
Depreciation ये है. अब suppose I'm in domestic economy, I'm making this pen in 80 rupees. Earlier I was selling it in $1. Now I'm making it in 80 rupees. When I sell it, 80 rupees is only $0.8, not $1. Will I sell it cheaper? अब $1 is equal to 100 rupees ना. जब मेरा depreciation हो गया $1 is equal to 100 rupees. तो 80 rupees is less than $1. I'm selling it in less than $1. If my currency depreciates, my export becomes cheaper. और अगर वो depreciate नहीं हो रहा तो आप devalue कर दो. चाइना devalue कर देता है. So that your exports remain cheaper. So that you have huge share in the export market. So the main difference between depreciation and devaluation is depreciation happens because of market forces, devaluation happens because of government interference. Appreciation happens because of market forces and devaluation happens because of interference. Government interference or monetary policy, जो monetary committee उसका interference. Let us also understand a relation between inflation and exchange rate. Inflation and exchange rate. यहाँ पे भी ना बहुत I remember I give this example because मैंने ना उस time when I was working as a software engineer, I was doing a course from Melbourne University about macroeconomics. ऐसे मैं रात में कुछ पढ़ता रहता था. तो कोर्स पे मैंने पहले तो बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज किए थे, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबके बहुत सारे कोर्सेज किए क्योंकि बीटेक के टाइम ये चीजों को इतना पढ़ा नहीं था. देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्ल्ड हिस्ट्री का एक कोर्स. देन आई आल्सो डिड एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी से मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स. ये ऑनलाइन कोर्सेज थे, दोस वर नॉट फिजिकली गोइंग देयर एंड डूइंग. तो वहां पे मैंने समझा था कि एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, जिस कंट्री का इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा उस कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट होगा. एक रूल, इफ योर इन्फ्लेशन is high, if your inflation is high, your currency will depreciate. We'll understand how it happens, but ये rule ध्यान में रखो. तो this course I had just completed 2013 दिसंबर में कंप्लीट कर रहा था और 2014 में ना इलेक्शन का बहुत माहौल चल रहा था. मेरा एक दोस्त था, he has studied at एम्स, very very bright student ना, बहुत अच्छा बच्चा था. वो बोलता था उस टाइम $1 was of 60 rupees or so, and he used to argue जब मोदी जी पावर में आएंगे $1 will become 40 rupees. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना. आई सेड कि यार मोदी जी कितने भी अच्छे नेता हो, कुछ भी हो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हियर इन्फ्लेशन रेट इज हायर. इफ इन्फ्लेशन रेट इज हायर, आवर करेंसी विल कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग. वो 60 से 65 ही जाएगा अनलेस यूएस में इन्फ्लेशन इंडिया से ज्यादा हो. यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, वहां इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं होता है. आई यूज्ड टू गिव हिम दिस. मैंने एक दो बार उसे समझाने की कोशिश करी, लाइक तो बायस्ड है. मैंने कहा बायस्ड वो अलग चीज है. अंडरस्टैंड दी साइंस. चाहे कोई भी पावर में आए, इंडिया में करेंसी विल कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इंडिया में इन्फ्लेशन विल रिमेन हायर. तो अभी जब ये ऑपोजिशन वाले मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं कि रुपी इतना डिप्रिशिएट हो रहा है, आप कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हो, उनको भी पावर में ला दिया जाता ना ऑपोजिशन वालों को, तब भी रुपी डिप्रिशिएट ही होता. वो रेट एट विच इट इज डिप्रिशिएटिंग में चेंज, but rupee is going to depreciate only because inflation India में higher है when compared to a developed country. इस रूल को बहुत ध्यान से समझो. जिस जगह like if when we are comparing two countries, country where inflation will be higher, उन दोनों के exchange rate में generally there will be a depreciation here. और उसे simple terms में समझते हैं. वैसे let's consider this pen only. इस पेन के perspective से समझते हैं. Now this pen is being made in US in $1. In India in 80 rupees. Fine. अब इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो this pen will be made, making this pen will become expensive. This pen will be made in 100 rupees. अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, rather than making in 80 rupees, will it be made in 100 rupees? तो हम जो चीज 100 rupees में बना रहे हैं वो $80 में बन रही है. Roughly $80 becomes 100 rupees. क्या बात समझ में आ रही है? Oh, sorry, वो यूएस में $1. Let's say inflation here is 0, inflation in India is high, 25%. So now we are making this pen in 100 rupees. They're still making it in $1. So now $1 will become 100 rupees.
Agar if in the world economy only pen existed, it's not only pen, it's a lot of other things. But in India, in generally inflation is higher. If inflation is higher, what does that mean? हमारे यहाँ चीजें ज्यादा महंगी बन रही हैं. तो जब आप एक्सचेंज रेट करोगे, एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स. इट इज डिसाइडेड बाय दैट. और सिर्फ इन्फ्लेशन ही ज्यादा नहीं होता. जनरली क्या है ना, इन द पास्ट, अभी तो आर पता नहीं, आर आईटी सेक्टर हैज बिकम सो एक्सप्लॉइटेटिव. बट इन द पास्ट व्हाट वाज देयर वाज, इंडिया में ग्रोथ रेट वाज आल्सो हायर. ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ सैलरी ग्रोथ एक्सेट्रा. जैसे इंडिया में 20%, 25% सैलरी ग्रोथ भी मिल जाती थी. जब मैं जॉब करता था, आई रिमेंबर माई फर्स्ट सैलरी ग्रोथ वाज 22-23%. इफ यू आर इन अमंग टॉप परफॉर्मर्स. अभी मैं न्यूज देखता हूँ, वो बोलते हैं कि किसी की टॉप परफॉर्मर्स को 1 to 5% का ग्रोथ दे रहे, बाकी किसी को कुछ नहीं दे रहे. इंडिया में ग्रोथ रेट was generally higher because इंडिया में everything was undervalued. मेरा दोस्त जो यूएस चला गया, who decided to take job in US, I decided to take job in India. इंडिया में हमें उस टाइम 12 लाख रुपए मिलते थे. उनको यूएस में सैलरी टर्म्स में लगभग $120,000, 72 लाख रुपीस मिल रहे थे. तो वहां पे थिंग्स वर ऑलरेडी एक्सपेंसिव. वहां पे लेबर इज ऑलरेडी एक्सपेंसिव. यहाँ पे लेबर इज चीपर. तो इवेंचुअली वैल्यू विल बिकम इक्वल as economy gets globalized. तो यहाँ पे things will keep on getting more expensive. If things keep on getting more expensive, what would happen? Inflation है, inflation होगा तो रुपी depreciate होगा. Are we getting this? तो जहां inflation रहेगा वहां पे depreciation. If two economies are there, if this economy there is more inflation, there will be more depreciation. ये रूल ध्यान में रखो. Now please understand, it doesn't mean that this is the absolute factor. There are a number of other factors also responsible. But if everything else is constant, if in one economy inflation is increasing, in another economy inflation is not increasing, depreciation कहाँ होगा? Where would depreciation take place? It would take place in the economy where inflation is increasing. Where inflation is, if everything else is constant. If there are other factors also, then other factors will have a thing. But if other factors are constant, then the economy where inflation is higher, that economy's currency will keep on depreciating. Comfortable? Keep this rule in mind. Don't get influenced by WhatsApp University. Like now, the opposition today will start criticizing government. If we come to power, we will make rupee go to 60 rupees. That will also be WhatsApp University knowledge. Rupee will not go to 60 rupees. Right? Wo is fine. Let's come to Sir, does the Forex reserve of a country actually mean Forex reserve with the RBI or Forex reserve held with the country? देखो, हमने Forex reserve with RBI ही mostly consider किया है ना? But result क्या होता है? Forex reserve with RBI increases when your balance of payment is positive, because RBI can buy more Forex reserve and all. Eventually, things go to RBI only. But what about borrowing and liabilities of other institutions? Or they being effectively funneled? देखो, please understand. When I'm borrowing money, what am I? Let's say Reliance Industries, I'm borrowing money. I want to borrow 100 crore rupees. So when I go to foreign country and borrow it, I'll borrow it in dollars. But in India, how do I need it? I need it in rupee. So that dollar will first convert it into rupee, and that dollar will eventually go to RBI. That is why when we have money coming in, or I say when I'll return this money will first get converted into dollars. मैं बैंक के पास उसे जाके कन्वर्ट करूंगा डॉलर्स में, and that dollar will be going out. So eventually that is coming from RBI. Here the relative supply and demand of the foreign domestic currency are in relation to the whole economy and the regime RBI is regulated. Eventually it will be through RBI only. Yes. Hello friends, I hope you enjoyed the economy video. In this series, between 10th of March and 17th of March, we'll be releasing 2 videos every day and ensure that your entire syllabus of the basics of economy for preliminary examination is getting completed. Please share your feedback in the comment section and do share this video more and more so that
more students would be able to reach it, and we would also be able to reach more students. In the feedback section, in the comment section, we have seen some requests for science module, environment module as well. Now, it won't be possible for us to put the whole course on YouTube, but what we have done is we have made the courses or individual modules available in only 1000 rupees till 20th March. So you can buy science module in 1000 rupees, environment module in 1000 rupees, modern India module, ancient culture module, geography module, polity module, even when international bodies and mapping ka module aayega, that also you'll be able to buy in 1000 rupees if you use the coupon code LevelUp Holi. There is a Holi offer available till 20th of March. You can do that. Okay, so we have made it very, very affordable so that everyone would be able to do it. Everyone would be able to get it. So I hope you enjoy these videos a lot, learn a lot from it, and clear your preliminary examination. In the end, I also have one more announcement. Our GS Foundation course for 2026 have also started. So not for you people, the people who are watching this video are already preparing for 2025 exam, but your junior, your other friend who may be preparing for 2026, if you have good experience at LevelUp IAS, do recommend us. Do tell your friends about us, because for us, word of mouth is very important. I promise you here that at LevelUp IAS, we will provide the best GS Foundation program, the most comprehensive GS Foundation program in one of the most affordable cost for everyone. We will make sure that your juniors, your younger brothers and sisters who are studying with us at GS Foundation for the exam 2026 will be the best prepared people for 2026 preliminary and mains examination. So this is another request. Please do share, do subscribe to our channel, and please do recommend our GS Foundation program also to your juniors or your younger brothers and sisters. Thank you very much.